Good afternoon, all. Good afternoon, students. May I audible? Yes, ma'am. Very good afternoon. Very good Yes, afternoon. ma'am. Audible. Yes, ma'am. Audible. Shall we start the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last class we already discussed about what topic? Last class से कौन हम डिस्कशन करी Excuse me, ma'am. Yes, last class से हम कौन डिस्कशन सब करी किछि मन अछि? मैम मु लास्ट क्लास रे जॉइन हेई परिलिनी माने 10 मिनिट्स आफ्टर में जॉइन करिथिली बट जॉइन हेई परिलिनी अच्छा माने मैम एमती किछि अछि कि आपनकर 10 मिनिट परे जॉइन करले आपनकर आउ ऐड करू नाहंती एटा आपण किछि रूल अछि एमती ना मुझे जानी अवश्य आप ऑफिस रे पचारे से पारे मुझे विषय किसी आईडिया नहीं मोर आज्ञा 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 हाँ अपन डायरेक्टली थैंक यू मैम माने हाँ पचारि देबे माने से जो ये रे अपन कनेक्ट करके पचारे से कहि देबे आपको कौन सी कारण से जब कनेक्ट न करूँ मतलब सेमती किसी माने 10 मिनिट्स पर कले भी न करिए बोले किसी माने नु करिवे बोथे अच्छा लास्ट क्लास रे कोमानी आज्ञा मैम थिले कि हाँ कोमानी थिले क्लास रे तृप्ति मैडम थिले ना Yes, Hello. ma'am. हाँ Yes, ma'am. मैडम हाँ क्लास से थिले Last class ma'am meal planning for lactating and pregnant women को विषय रे class ହେଇଥିଲା. the topic is already over ना Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, infants विषय भी discussion ହେଇଥିଲା. Yes, yes ma'am. very good Infant. हाँ Planning infant for the infant. Infant. infant हाँ Infant का infant and lactating mother RDA Yes, ma'am. Yes, recommended ma'am. dietary allowance and supplementary feeding. I also discuss about that pregnancy and lactational diet and infants feeding also. Okay. Yes, yes, ma'am. I already discussed about the why the cholesterol is important. Huh? I already discussed na about the importance of cholesterol. आपण माने समस्ते सुनी पारछनी मो वॉइस यस Yes, ma'am. मैम Yes, Yes, हाँ yes. ma'am. तो हाँ कोलेस्ट्रॉल रो बेनिफिट कौन व्हाई यू आर टेकिंग दैट कोलेस्ट्रॉल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काहे कि एटा इंपोर्टेंट एटा हम कहि देइथिली Ma'am ଆଉ ଟିକେ recap କରିବେ କି? ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ କି? हाँ मु कहिबारे किछि नै बट आमे हम टॉपिक रु डेविएट हेबा एंड टाइम जे हमर माने आउ हमर संभव भी नाही हैला कि जानि Okay, छथि ma'am. कोलेस्ट्रॉल कहले कोन बुझुचंदी जी क्लास अटेंड करथिलु व्हाट डू मीन बाय कोलेस्ट्रॉल Colostrum is nothing. Colostrum is the very the fast milk ejection from the breast after the delivery. Okay, colostrum E has an efficiency, especially its very high concentration of antibodies and white blood cells which protect the newborn from the any kind of infection. Okay, and it also contains certain growth promoting substance also. It also contains the certain kinds of growth promoting substance. It's very good for the infants. It mainly very good for the strengthening of the body immunity for the infant, and it is highly required after the
delivery. Then I already discussed about the breast milk is the best food for the infant because it is very safe and easily available, and it is also free from the any kind of contamination, and also very good for the development of strong bond between the mothers and the child. And it's also very good for the any kind of infection and the food allergic also. And I already discussed about the when to introduce the complementary feeding. Complementary feeding in ODI it is called as the Annaprasana. Okay, and that complementary feeding we will be start just like the semi-solid supplement, solid supplement like that. And Yes, ma'am. semi-solid supplement and the solid supplement. I already discussed about all these things. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next is the solid supplement. In regarding the solid supplement also I already discussed. In this supplementary feeding now we have to add some cereals like product like the rice or wheat or that suji khiri or simia, yeah, any kind of that millets also. And in that you have to add some pulses. Pulses means any kind of seed. Okay, that may be dal product, that may be any kind of soybean, Bengal gram dal, brat gram dal, horse gram dal, every types of dal is there. So you have to add in the cereal product to the pulses, and along with not only the cereal and pulses is required for the infants or for the baby, along with the cereals and the pulses, greeny leafy vegetables is also highly required for the body protective and the regulatory function of the baby. And you maybe add some cereal pulses and milk also in the during the preparation of the supplementary feeding. You maybe add some cereals like product like I already told you that wheat, yeah, rice. Otherwise, you can add sagu, simia, yeah, suji like that. Along with that, you have to add some pulses, some seed like pulses. Along with that, you have to add milk and dairy product also. And in some other supplementary feeding, you maybe add some cereals, pulses, vegetables. Along with that, you have to add some fresh curd in the lunch time while you are preparing the any kind of diets, na. Just like khichdi. In khichdi, you are using the rice. Rice belongs to the cereals group. In pulses, you are adding the green gram dal. In vegetables, you have to add the regional and seasonal vegetable which is available in your area. After the preparation of all this, after including all these things, cereals, pulses, vegetables, along with that, you have to add either olive oil, otherwise cow ghee, otherwise coconut oil also. It's very good for the health. And you have to, finally, you have to add some curd also, because that curd is very good for the strengthening of your gut activity, and also it's very good for the it acts as a very good digestive activity. Digestion capacity will be increased if you will add the curd in the feed. That's why you don't think that curd will aggravate the cough or any other respiratory disorder. Not like that. Okay. कौन कहूची बुझी होची ना मुझे हाँ कहूची. Yes, ma'am. तो आमे के Yes, ma'am. भाभी जे माने पिला को जदि आमे किछि देई दोछंती कर्ड माने मु एंती कहूनी जे माने जोटा कि माने पूरा खट्टा हेते हुए आमे फ्रेश कर्ड को राती रे प्रिपेयर करबा एंड ताको रूम टेंपरेचर रे बाहर रखिबा. Then we will, after the preparation of the khichdi or after the preparation of any kind of porridge, you can add the fresh curd and little salt must be there, and you add some ghee also. You can ताको भी आमे अजे सप्लीमेंटरी फीड कि अजे सेमी सॉलिड फीड आमे ताको बेबी को आमे देई परिबा. And आउ केतरा केस रे मध्ये आमे cereal सहित we will add some animal foods and greeny leafy vegetables. You always add the greeny leafy vegetables, because if you will not add these greeny leafy vegetables, then generally the baby will very prone towards the constipation. If you will add some ghee and greeny leafy vegetables and pulses, so it will very good activity. It acts as a laxative. Laxative means it's very good for the clearance of your constipation problem. That's why you have to add some greeny leafy vegetable. Not only greeny leafy vegetable is very useful. Along with the greeny leafy vegetables, you will add each and every kinds of vegetable in the supplementary feeding. Specifically that जो हमारे मार्केट रे जो आसे हमारे कंदमूल जो नाली रेड कलर जो कंदमूल, इट्स वेरी गुड फॉर द सप्लीमेंटरी फीडिंग.
आपण जहाँ भी प्रिपरेशन करंतु से 2 ରୁ 3 पीस से पकई देबे जोटा कि पिलर वेट को बढ़ेबारे हेल्प करबो एंड से आल्सो वेरी गुड फॉर द एंटी कार्सिनोजेनिक कैंसर सेल को बढ़िया को दबनी इट्स वेरी गुड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आल्सो एंड यू मे बी ऐड द cereals milk fruits में जो सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होता है ना यू हैव टू ऐड इन दैट आल्सो एंड नट्स आल्सो cereal and in some feed also may add cereals animal foods orange yellow vegetables I already discussed about this and carrot pumpkin otherwise bell pepper like black and like that green color red color yellow color 3 to 4 varieties of that bell pepper is available and that bell pepper is very rich sources of antioxidants and flavonoids is there and that's very good for the baby also that's why you have to add all these things in during the preparation of supplementary feeding बुझी होची ना मु कोन कहूची बुझी परछन ना नहीं मुझे कहूची Yes, ma'am. ओके तो हमें जेतबे सप्लीमेंटरी फीडिंग हमें स्टार्ट करछन हमें केति की क्वांटिटी हमें दबा फर्स्ट होची एवरेज अमाउंट होची ड्यूरिंग द 6 to 8 months of that जेतबे बेबी रो बॉयस 6 to 8 months भीतर हेतो एट दैट टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम द 2 to 3 tablespoon 2 to 3 tablespoon में स्टार्ट करबा जितबे 9 to 11 months हेतिबो एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड मींस हमें एडमिनिस्ट्रेट करि परबा 250 ml मींस 1 cup or 1 bowl small bowl that contains the 250 ml okay and during the 12 to 23 months at that time you have to give 3 to 4 of 250 ml cup or 1 bowl इतकी ही हमें दबा gradually we will be increase the feeding and also while formulating the baby feeding at that time up to 6 months after the 6 months you have to give some breast milk fast feed and at 9 a.m. na you have to administer some multimix that may be masked fruits or vegetable and 11 a.m. also you just peel out the fruits seasonal and regional fruits and fruits also very good for the baby and 1 p.m. you have to give some khichdi like substance or puris like substance at 4 p.m. you may add some breast milk otherwise any soup for soup means seasonal regional vegetables otherwise dal soup is also very good for the baby it's very good for the GI tract and it's also very good for the constipation also and at the dinner time you have to give that puris otherwise you can chapati and milk otherwise that dalma overboiled dalma along with that chapati also you can give I already discussed about the what is the feed during the pregnancy, the diet during the pregnancy and the lactational period, and what is the infant feed and what is the supplementary feeding after the 6 months of 6 months. Then what is the diet for preschool children? Preschool children means preschool children हमें कहाँ को कहिबा हाँ कहतु आपण मैंने जानी किसी तो इंटरैक्शन करेंगे ना क्लास रे पूरा साइलेंट रही मु कौन भाभी Ma'am, 1 to 5 years. वेरी गुड हाँ 1 to 6 year पर्यंत पिला को आमे कहिबा जे प्री स्कूल चिल्ड्रंस ओके एट दैट टाइम कौन होची ना रेगुलरली वेट गेन इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस ऑफ द चाइल्ड्स ओवरऑल हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस it should be done very means frequently the weight will be increases and once every month now up to the age of 3 years and at least once in 3 months you have to check the body weight. What is the dietary recommendation during the preschool children? Specifically at the age of 1 to 3 years now the calorie requirement of the baby is 1000 to 1010 kilocalorie requirements. The total means per day the calorie requirement of the baby
which is belongs to 1 to 3 years of age, they require the calorie requirement to 1010 kilocalorie per day, and the protein requirement of that baby is 12 grams protein is sufficient, and the calcium requirement is 500 milligram at the age of between the 1 to 3 years of age, and the iron requirement per day is 8 milligram. Retinol, that means vitamin A requirement is 319 milligram microgram, because at that time the requirement of the vitamin C is very vital. If there is a deficiency of vitamin A, then there may be the chance of xerophthalmia or night blindness. That's why you have to supply 390 microgram of retinol and vitamin A also. And the requirement of beta carotene at the age of 1 to 3 years, 3120, that means 3120 microgram is required. And zinc is also play a very vital role during the at the age of between 1 to 3 years, then the zinc requirement per day is 3 microgram, and the magnesium requirement is 90 microgram. And at the age of 4 to 6 years, the calorie requirement will be increases, and the calorie requirement of at that period is 1360 kilocalorie per day, and the protein requirement of the baby is 16 gram, and the calcium requirement is 550 microgram, and the calcium requirement of the age between the 4 to 6 years of baby is 550 milligram, and the iron requirement is between the 4 to 6 years 11 milligram, and the retinol requirement is 510 microgram, and the beta carotene requirement is 4080 microgram. The zinc requirement is 4.5 milligram, and the magnesium requirement is 125 microgram. This is all about the daily dietary recommendation of during the age between the 1 to 6 years of age. Excuse me, ma'am. Ma'am, मैम मोर गोटे क्वेश्चन अच्छे मैम ए जो आपण आमे जो डाइटरी सप्लीमेंट रे हमर वेट टा किछि मेजरमेंट अछि एको मैटर करे जो डाइटरी टा में एटा हेई छी जे छुआंकर वेट हिसाब रे किछि अछि अंकर किछि चेंज हुए कि नहीं छुआंकर वेट कहले त हमको छुआर स्टैंडर्ड वेट ही नेबा को पड़िबो ना माने जेमति कि मने कर गोटे छुआटा मने कर ओबेसिटी थिबो या बहुत थिन थिबो बुझेला ना आज्ञा आज्ञा जो अंडरवेट थिबो कि ओवरवेट थिबो एटा होची आमे जोटा में आदि जोटा कहूची जोटा रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर द जनरल मींस जो माने कर बीएमआई टा नॉर्मल थिबो जो माने कर बॉडी टा स्टैंडर्ड वेट थिबो से माने को एतिके एंड इट इज नॉर्मल आटू जति अधिका या आटू जति कम होची ताले दैट इज abnormality, so it's not good sign बुझेला ना नहीं ओके मने करो गोटे पिला आसीची तारो 1 to 3 इयर्स भीतर तार मने करो 55 किलो अछि सेटा कोन नॉर्मल बॉडी वेट के नो मैम आमे कोन करन पिला मन को सब प्रकार खाद्य छुड़ माने पूरा भरपूर की आमे खुआई दियंते ताको जबरदस्ती ताको दियंते ना दियंते ने यस मैम हाँ तो जिते बळे आमे दियंती मेंचे सारा खाद्य खाइबा तार बॉडी केते मेटाबॉलिज्म करूछ आमे सेटा देखंती तार एनर्जी एक्सपेंडिचर केते होची आमे सेटा को आमे केबे फोकस करंती ने बट आम काम हला आमे इनपुट रे जति की पूरे परचंत खाली देई चलंती किंतु आमको दरकार आम पिलार से समय फिजिकल एक्टिविटी कौन होची पिला टिके हांबुडुची की पिला टिके निजे निजे गुरुंडुची की पिला खेलुची की गोड़ हाथ बाड़े की छाटी की पिला खेलुची की तो जेते तार बॉडी रो किछि एक्टिविटीज रहइबो से ताहले कोन हो पिलार एनर्जी एक्सपेंडिचर मध्य बढ़िबो जे एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़िबो ताहले हम से अनुसार जदी कैलोरी हम ताको बॉडी को इनपुट दोउथबो ताहले से एनर्जी ता बॉडी रे पूरा यूज हे जीवो किंतु जेते बेला हम माने कोन करंती हम जे प्राय माने आजिकल कोन न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा हम तो बहुत बड़ फैमिली के बिलोंग्स करंती नी तो जदी बड़ फैमिली कोन हुए पिला को ये टिके धरला पिला आसे तो टिके खेलला तास तो टिके खेलला तास तो खेलला कि ये टिके ताको चलै देला कि गुरुंडले ता पछर ताको कि गोटे लोक थिला अनैबा पाई हम जेजेमा हो कि हम आई हो तो कि हमर दादा बौनी एमती सब किंतु आमे कोन न्यूक्लियर फैमिली रे जेतो बिलोंग्स करू ना तो आमे जति हम पिला को फोकस करंती यस और नो
आमे Yes, पिला ma'am. को जति आमे फोकस करन त आमे केते फोकस करे हमर काम सरिला परे हमर ड्यूटी आबर सरला परे आमे टिके पिला को देखियो त सेति के भीतर भी हमर इनपुट ता ज्यादा चली थाए तो सेटा को जाई के कोन पिलार एक्सपेंडिचर रेट बहुत कमी जाए जा फल कि पिला ओबेसिटी हे जाए आउ केतरा केस जत आमे बहुत सारा काम रे इन्वॉल्वमेंट हे कि रहि जानती आमे पिला को भी नेग्लेक्ट करन इन टाइम रे भी देई परनु जति पे पिलार अंडरवेट भी हे जाए तो दैट अंडरवेट इज आल्सो नॉट नॉर्मल तो आमर नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर द 1 to 3 इयर्स पर्यंत हमें 1000 to 1010 किलो कैलोरी होची नॉर्मल जो 1010 किलो कैलोरी हमें नबा सेही भितरे पुनी उतरे हमर केते हमें दबा विटामिन्स केते देबा मिनरल्स केते देबा फास्ट होची कोन कोटा मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें केते देबा केते कार्ब देबा केते प्रोटीन देबा केते फैट्स देबा देन आफ्टर वी विल हमें चिंता करबा केते विटामिन्स एंड मिनरल्स रे मध्ये हमें केते केते मिनरल्स कोन कोन सप्लीमेंट केते के हमें क्वांटिटी रो दबा बिकॉज़ जति सेटा भी जति अधिक हे माने कर विटामिन सी अधिक दोची पिला को बुझिल मैम कहचंती विटामिन ए नेले एते सारा तर बेनिफिट अछि एंड आई मीन विटामिन ए ज्यादा दबा तो कोन होबो हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए तो हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए होबो देन इट विल लीड्स टू एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर तो हमको सब जगह अंडर मॉडरेशन रे हमको दबा को पड़ेबा ना हाइपर ना हाइपो जदि हाइपो भी होबो तले इट विल कॉजेस द डिसऑर्डर इफ हाइपर भी जदि होची इट विल आल्सो कॉजेस द डिसऑर्डर वी हैव टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल देन सेकेंडरी थिंग्स इज दैट आपण जो पचारिले प्रश्न जे पिला केते अछि हम सेति के दबा बिल्कुल नो आपण को माने कर मोर हाइट जेति को फ्रॉम द डे 1 कहछि इट इज एप्लीकेबल नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर मी फॉर एवरीवन for every human beings starting from the child up to the old age पर्यंत समस्त पर this rule is applicable मु कहिबा कथा हमर बॉडी रो ओजन केते ओजन अनुसार ही हमर उच्चता डेवलप माने अछि कि नाही अदरवाइज अपन सिंपल फंडा हला हाइट ता केते सेंटीमीटर सेति के सेंटीमीटर 100 माइनस करबे सेति के जति नॉर्मल वेट आसी जाउची ताले अपन जानिबे जे पिलार स्टैंडर्ड बॉडी वेट अछि बोले तो सेही अनुसार एते के किलो कैलोरी अपन डाइट तारा फॉर्मुलेट करिवे बुझी हला समस्त को Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. कोन आ कि किछ पचारछन के मैम ए जो 1 to 3 ईयर पिला मानकर स्टैंडर्ड वेट केते हबा कथा सेही तो मु कथा कहूची आपनकर बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट आपनको काम हला प्रथमे आपन बॉडी रो पिला रो हाइट आपनको नॉर्मली हमर 10 रु 8 केजी हेले भी हम ताको सफिशिएंट बोल 8 to 10 किलो होची एनफ ताटू जदि 2 केजी प्लस या 2 केजी माइनस प्लस और माइनस 2 केजी इज आल्सो नॉर्मल ताटू जदि अधिक होची ताले सेटा प्रॉब्लम हैला थैंक यू then maybe now I will discuss about the micronutrient requirement during the infancy during the preschool children specifically at the age between the 1 to 3 years the thiamine requirement is 0.7 milligram thiamine vitamin B1 the requirement is 0.7 milligram and the requirement of the riboflavin is 1.1 milligram and niacin requirement is 7 milligram and vitamin C requirement is 30 मिलीग्राम पर डे तो आपण माने केबे भी भाबिबेनी जे हमको विटामिन सी पिला को दबार नाही जोकि आपण एंड फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट इज आल्सो 120 माइक्रोग्राम एंड विटामिन B12 रिक्वायरमेंट इज 1.2 माइक्रोग्राम तो एंड 4 to 6 इयर्स भीतर आपण को थायमाइन रिक्वायरमेंट होची 0.9 मिलीग्राम राइबोफ्लाविन रिक्वायरमेंट 1.3 ग्राम and the niacin requirement at that period 9 milligram vitamin C is also very highly required during the 4 to 6 years of age 35 milligram and folic acid requirement is 135 microgram and vitamin B12 requirement 2.2 gram तो आपण माने केबे भी भाबिबेनी पिल्ला माननको आमे केबे मध्ये विटामिन सी रिच फूड दबा नाही आपण मानक साइकोलॉजी कहतो जति विटामिन सी आमे दबा देन जेहेतु से बहुत सारा मिल्क सहित एडिक्टेड थाए मिल्क रो आमे बहुत सारा सप्लीमेंट पिल्ला को डेयरी प्रोडक्ट ही ज्यादा देइतांती जो माने कि मदर भी मिल्क न हले आमे कोन करंती माने फार्मूला फीड ऊपर भी हमें डिपेंड करंती बट आम मानक सोच हैला जदि हम विटामिन सी रिच रो किछि भी खाद्य हमें देबा देन एटा पुनी क्लॉटिंग करिवो एंड पिलार जो मिल्क भी जहाँ भी नहीं थिबो से आपनकर कोन करिवो कोआगुलेशन बनै देबो बट नॉट लाइक दैट आपण एनी हाउ पर डे आपण जदि 1 to
3 years एज भितर बेबी अछि ताल ताकू निहाती रूपे 30 मिलीग्राम रो आपण विटामिन सी देबे जदि विटामिन सी आपण दउचंती बॉडी रे सफिशिएंट विटामिन सी पिला बोलू 3 एट द एज ऑफ 1 to 3 years भितर विटामिन सी ज्यादा नै छि से ताहले तार सेटा ही आपनकर एंटीबायोटिक हिसाब रे काम करिवो एंटीवायरल भलिया काम करिवो एंटीबैक्टीरियल भलिया काम करिवो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर्स दैट मीन्स आपनकर समस्त प्रकार ERTI हो किंबा LRTI हो ERTI is the upper respiratory tract infection हो किंबा lower respiratory tract infection हो both whole totally respiratory tract infection is very good and those who are having the problem of the bronchitis or pneumonia or lungs disorder or any kind of digestive issue also is very effective for them. Not only it's act upon the GI tract and the respiratory tract, it's also very good for the management of your any kind of skin disorder. It's also increase your body vitality. That's why you, during the from the age of 1 to 6 daily basis you have to administer 30 milligram of that what vitamin C must be in their diet. Understood? मैडम एक्सक्यूज मी मैडम हाँ मैडम ए जो 30 मिलीग्राम विटामिन सी केतोटी माने मिनिमम केतोटी ये ऑरेंज या गुआभा रु मिली परबो आपण हाँ शुणु 30 मिलीग्राम्स मीन्स आपण गोटे आपणकर आपणक पई माने एटा तो मु गोटे देखंतो एबे आपण जेंति बचले 30 मिलीग्राम हम कोटू पाइबा माने केतेटा जिंस नले आपण 30 मिलीग्राम पाइबे तो आपण सब बेले हमर NIN जो अछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बुझ पाले तार गाइडलाइंस रो गोटे बुकलेट अति सस्ता रे आपण जोत्र पे डाउनलोड करि परिबे जोत्र कि न्यूट्रिटिव वैल्यू उडा को रहिछि आपणकर बुझ पाले तो आपण सेइटा देखि देले आपण पर्टिकुलर जानि परिबे मु खाली कहूनी आपण तक पिला को ऑरेंज देबे बोली ऑरेंज रे तो विटामिन सी अछि ऑरेंज सहित आपण को बहुत सारा मल्टी सोर्सेस जेमति कि आपण जदी स्पिनाच भी नउछन सेतरे भी विटामिन सी अछि आपण जदी ड्रमस्टिक लीफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द खिचड़ी कि अदरवाइज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द डालना आल्सो यू कैन ऐड गोटे पत्र मुठा टी होबो हमें that drumstick leaf भी हमें ऐड करि परिबा because drumstick leaf it contains the richest sources of ascorbic acid तो सेटा कोन करी आपण करो ब्लड रा सब बेले सुगर लेवल को मेंटेन कर तो सेही जो विटामिन सेटा हम बॉडी को मिले से बॉडी बहुत सुंदर सेटा को ऑब्जर्व करे केबे केबे आपण आमला तो छोटो छुआ को आपण देई परिबनी आमला रे आपण लिटिल बिट जदी टिके गुड़ देई कि ताकू टिके ये करी कि ताकू ग्राइंडिंग करी कि आपण जहां भी प्रिपरेशन करछन सेटा टिके एथ्रु टिके छाड़ी देबे कोथ्रु आपनकर येरु ता सहित अदर सोर्सेस रो मध्ये आपण टिके 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 ने एमति भाब केबे भी भाबिबिनी गोटे जिंस रु आपण खाली खट्टा फल मैडम कहने जे खाली खट्टा फल रे विटामिन सी अछि बेले लंका रे कंचा लंका तो बहुत बढ़िया विटामिन सी अछि आमे आर्डर माने कंचा लंका भी डेली बेसिस रे खाद्य रे नै परिबा बट आपण को पिल्लार प्रेफरेंस कोटा आपण पिल्ला को कोटा दे परिबे सेटा देखिबे एंड आपण माने को समस्त पे गोटे जिंस कहू जो न्यूट्रिटिव वैल्यू कथा कहउचंती न्यूट्रिटिव वैल्यू जो कैलोरी कैलकुलेशन इज वेरी वाइटल बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट आपण भाबिबे जे मु जो कप टी गिनाटी भात खाउची सेटा केते कैलोरी सेटा पुनी आपण को डिपेंड करे को चावल रे आपण भात नउचंती रिफाइंड सीरियल्स नो रिफाइंड नउचंती ना ब्राउन राइस नउचंती ना सेमी पार्बोइल्ड राइस नउचंती ना को कैटेगरीज रे राइस आपण इन्वॉल्व करचंती तो सेही अनुसार आपण देखिबे आपण को सेही जो लिस्ट रे आपण पाइ जिबे 100 ग्राम्स रे केते अछि आपण पेशेंट को 30 ग्राम्स कहउचंती नबा पाइ ना 20 ग्राम्स कहउचंती तो 20 ग्राम्स रे ता कैलकुलेट करिबे केते आसला मु आपण को गोटे दिन एई क्लास भितरे किबा जदी आपण को सब्जेक्ट अछि कि नै मु त आगो को पूरा सिलेबस को जाईनी जदी थिबो मु निहाती रूपे आपण को कैलोरी कैलकुलेशन विषय मु कहिबे कारण एटा न्यूट्रिशन रे गोटे वाइटल चैप्टर बुझी पाले ना जो जिंसटा आपण मते पछाले केमती मैडम हमें जानिबा कोथरे 30 ग्राम्स अछि 30 ग्राम्स मु कहबे केते ग्राम सेटा बट आपण जते बेले हमें मु जते आपण मन कोन कहूची आपण माने गोटे वर्ष रु जते बेले 3 वर्ष बेबी रहउची ताले 1000 टू 1010 किलो कैलोरी डाइट माने पर डे इतकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अछि बुझी परछनी मु कोन कहूची तो आपण 1000 किलो कैलोरी गोटे दिन रे गोटे बेबी रो केमिति फॉर्मुलेट करिवे आपण न जानिबे जदी कैलकुलेशन जानि परले मु कथा यस मैम यस कारण सुनो तो आमे खाली पिला को खाली जे आमे खाली चावल दे देबानी कि खीरी दे देबानी कि खिचड़ी दे देबानी आमे दिन को भीतर फ्रॉम द फर्स्ट फीड अप टू द लास्ट फीड along with that जेहेतु पिला सी तो मु कहूची कोन आपण मेजर तीनटा मील्स रखिबे जेंति
लंच माने 10टा बेले दिन 10टा बेले आपण किछि नहले मते गोटे चपाती बनै कि ता सहित टिके खीर रे ताको सेमी ग्राइंडिंग करके आपण देई परबे अदरे सुजी हो सिमिया हो किबा आपनकर सागु हो किबा बाली हो किबा ओट्स हो ताको मते खीर देकी ताको सेमी ग्राइंडिंग करके ताको मते 4 ରୁ 5 चामच खुआई दे परबे किबा प्लेन रागी को मते ताको खीर देकी ताको गुड़ टिके देकी ताको मते आपण खीरी भले बनेगी 3 ରୁ 4 3 चामच मते आपण को छुआ पे एनफ देन लंच रे तारा वेराइटी आउ टिके चेंज करिवे एदर आपण खिचुडी दियंतु किबा आपण आउ किछि पोदिस जेंति आपण दलिया स्प्राउटेड गजा गहम करके ताको स्प्राउट करला पर ताको जो दलिया बनेकी सेतिर मध्ये आपण अदर वेजिटेबल ऐड करके बीट जेंति बीट हो कैरट हो किबा आपनकर कंदमूल जेंति कहूची गाजर कहूची डाली गोटे चामच हम डाली पकेबे तो ए सब गुडा को ये करके सेमी ग्राइंडिंग करके ताको घी गोटे चामच पकेके गोटे 2 चामच खाओ पिला 3 चामच खाओ सेही फीडिंग ता पिला बहुत समय पर्यंत डाइजेशन पे लागिबो एंड इट विल गिव्स मोर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड एथरे कोन तीटा को न्यूट्रिशन आपन को बैलेंस फॉर्म रे आपन को पिला रे मिल जिवो जोटे कि ओवरऑल ग्रोथ पे तारो हेल्पफुल हो एंड इट आल्सो इंक्रीज योर बॉडी वाइटलिटी मेन जो पिला बडू इन तार बॉडी रो इम्यूनिटी बूस्टर तारो हे पारिबो बुझिएला एंड तार कोनोसी प्रकार डाइजेस्टिव इश्यू रहिबो नाही सेहि पे प्रत्येक फीड रे अपन मन को बार बार रिपीटेडली आई एम सेइंग अबाउट दैट while you are designing any menu for the baby or for the adult for anybody na you have to add some cow ghee otherwise any kind of healthy fats in that diet otherwise हमर कोन में माने भाबी बेनी छी हमको फैट्स रो बॉडी रे आवश्यकता बिल्कुल नहीं fats is highly required for our body for the synthesis of our all the mechanism of inside our body na that good quality of fats is highly required जदि हम फैट न नबा ताहले हमर बॉडी रे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हे परिबो नाही किंतु हमर प्रत्येक माने हमर सबटु बेसी भूलटा हे जाय एथि जे हमर जहां भी अपन डाइट प्लान अपन रेडी करंतु सब बेले हम कोन करंती बेसी रही जे हम खाद्य रे कार्ब कंसंट्रेशन ता कार्बोहाइड्रेट हम सब बेले ज्यादा थाए प्रोटीन फैट रो कंसंट्रेशन ता हम कमे देई थांती जदि हम फैट हम ज्यादा नबा ज्यादा माने हम कोनी अपन को अनहेल्दी फैट्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू वन इज द saturated fatty acid another one is the unsaturated fatty acid I mean daily basis we have to avoid the saturated fatty acid and the trans fatty acid all these types of fats is not good for our health because it causes the very means बहुत प्रकार कार्डियोलॉजिकल इश्यू से बनौची तो we have to while I am saying about the good fat healthy fats mufa poly unsaturated fatty acid mono unsaturated fatty acid पिला जदि छुआ को आपण खाद्य दोउचंती सेतिर मध्ये बादाम आपनकर छोटो चीना बादाम जो मार्केट रे मिलुची चीना बादाम को मध्ये आपण कोनसी खाद्य रे ताको सेमी ग्राइंडिंग करके 2 रो 3 टा आपण आराम से देई पारिबे तो एई भलिया खाद्य को हमें निहाती नबा दरकार आ जदि हम घियो या ऑलिव ऑयल ए सब किबा काजू रो किछि पाउडर हो किबा आपण ड्राई फ्रूट्स रो किछि पाउडर जदि सेतिर हम ऐड कर दोजंती तो पिला को बहुत समय पर्यंत तार भोकटा रहिबो माने भोकटा बार बार फ्रीक्वेंटली लागिबो नाही एंड तार मसल्स वेस्टिंग हबो नाही पिला जो आपण माने भाबुथिबे जे मो पिला को जेते दोउची पिला एते खाउची किंतु पिलार वेट पुट अप हो नाही बट से मसल्स गेन पे मसल्स रो वेस्टिंग को बर्न करिया पे हमको निहाती रूपे हेल्दी फैट्स इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी बॉडी पे निहाती दरकार आ कुछ जानवर अछि एक्सक्यूज मी मैम ए जो आपण गोटे गाइडलाइन रो कहले जानिबा पई सेटा आज कंफर्म करियो छन NINU तो NINU नहीं NIN लास्ट वन इज N हां ओके मैम थैंक यू मैम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ओके अदरवाइज हां आपण एया भी करि परिबे जदि आपण न पाउचंती क्लास सरी गला परे आपण तो मो नंबर भी आपण नै जाय परिबे आपण को परे गोटे चार्ट फॉर्म रे मो पाख ये कॉपी रे नै जिबे किबा केबे भी जदि होउची आपण इग्नो आसले भी मोठ नै जाय परिबे नै गला परे आपण सेही आपण को भीतर डिस्ट्रीब्यूट कर देबे सेटा भी आपण को पय बहुत हेल्पफुल हबो हैला सेहित्र मध्ये मो पूरा पर्टिकुलर डिजीज स्पेसिफिक जेमति थेरापेटिक डाइट चार्ट जोटा थेरापेटिक माने कोन डिजीज हमको डिजीज स्पेसिफिकली हमको कोन डाइट केते कैलोरी केते प्रोटीन केते फैट एंड केते माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट दरकार तार टेबुलर फॉर्म रे कोन डिटेल्स मो पाखरे अछि जदि हबो हम केतल भी सेटा अपन मन को देई परिबे हैला आगे मैम
And the requirement of that protein, calcium, vitamins A, iron is very vital during the infancy period. And while formulating the menu plan for the preschool children na amane prathame dekhiya padibo tar age group ta kona is the child is in the years between the 1 to 3 years age group or in the age 4 to years age group, and what is the income of that family to which the child belongs and which region does this child belongs. This three vital point is very much important. And after that, during the preparation, during the formulation of this diet plan for the preschool children, first you have to include the very energy giving nutrient, that is the carb and the fats. And second one is the protein, calcium, iron, vitamin A. It's very vital during the preschool periods. And the menu plan for that preschool children, first in the morning, early morning in your diet plan, early morning must be there. In the early morning, आपण माने कौन करिवे, either बिस्किट सहित मिल्क दे परिवे किंबा कोनसी प्रकार प्रोटीन शेक सहित आपण दि तीनटा बिस्किट को मध्ये डाइल्यूट करिके आपण देई परिवे. आफ्टर दैट माने आमे माने जेमति मेन्यू प्लान करूछंती एडल्ट मानक पई या 18 वर्ष पर लोक मान या 25 वर्ष या 50 वर्ष आम सेमती प्री स्कूल पिला मानक देबानी तांकर डाइट प्लान को आम निहाती रूपे गोटे अर्ली मॉर्निंग रखिबा, गोटे ब्रेकफास्ट रखिबा, गोटे मिड मॉर्निंग मींस अर्ली मॉर्निंग रे आम 6 to 7 भितर किछि ना किछि बिस्किट सहित खीर हो कि एनी प्रोटीन शेक सहित खीर हो कि किछि गोटे हेल्दी ड्रिंक्स भी आम दे परिबा. देन ब्रेकफास्ट किछि गोटे देबा, ब्रेकफास्ट 8 ରୁ 9 भितर ब्रेकफास्ट रखिबा. मिड मॉर्निंग आम निहाती रूपे पिला को 8 ରୁ 9 भितर गोटे ब्रेकफास्ट आम दे सारा पर देन 10 ରୁ 11 भितर आम मिड मॉर्निंग किछि ना किछि रखिबा. लंच 1 ରୁ 5:30 ରୁ 2:30 भितर लंच को रखिबा. एंड आफ्टरनून मिड आफ्टरनून मींस 5टा ରୁ 6टा भितर अगेन आम किछि पनीपरिबा सिझा सूप हो किंबा डाल हो किंबा किछि मिक्स फ्रूट्स कस्टर्ड बने के मध्ये छुआ को मध्ये आम दे परिबा. एंड तापर 2 आवर्स पर अगेन डाली पानी हो किछि भी गोटे दबा. देन डिनर टाइम रे हम जेमति हम कहितली किछि पोरीज हो खिचड़ी हो किबा आपनकर रोटी हो किबा आपनकर किछि गोटे बना चुना गोटे अदरवाइज सब वेजिटेबल को मिसे कि दस्त डाली टिके चावल जदि भी न होछि आपण दलिया भी ऐड करके मते जोटा कि स्प्राउटेड फॉर्म द दलियाटा आपण आनि कि यूज करिवे तो सेटा बेसी बेनिफिशियल. While आम जो इंट्रोड्यूस कर फूड ना न्यू फूड्स टू द चाइल्ड ना ऑफर वन एट ए टाइम मीन्स गिव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट जदि पिलार कौन इंटॉलरेंस रोचे आपण मैंने देखिए कि पिला लाइकिंग से ना डिसलाइक हो फूड को तो निहाती रूपे से समय से जिनटा को पिला को बंद कर माने छाड़ी देबे तापर नेक्स्ट टाइम पुणी इंट्रोड्यूस करने ट्राई करेंगे. आपण माने ताको फोर्सफुली कौन सी जिनस ताको से यदि रिजेक्ट होची गोटे फूड को ताको बार बार प्रेशराइज करके हमें दबा नहीं. जदि कौन सी जिनस भी पिला रिजेक्ट होची फूड इज रिजेक्टेड ना वेट फॉर ए फ्यू वीक्स और ट्राई अगेन तापर से पिला निहाती रूपे ताको एक्सेप्ट करिवो. And preschool child manak by specifically includes food rich in energy and the protein, and specifically severe in the food na you have to include the dairy product and greeny leafy vegetables, carrot, beetroot, mango, papaya and other vitamin C rich foods is very important. And you have to avoid the food intake when the child is ill, and never use food as a means of reward or punishment. जेतिकी दरकार सेतिकी ही देबे. And the पिला को specifically ensure that the meal time for the child is relaxing, and always you have to administer severe small bite size or finger size piece of food to the child, and introduce a variety of foods in your child diet. Serve small but frequent meals, includes the nutritious snacks in spicy between the meals also, and provide more foods than the usual intake after the child recovery from the illness.
and include the nutritious snacks in between the meal. Prepare meals according to the baby's like and dislike. And especially you have to focus upon the avoid highly flavored and spicy food, and discourage the child from the eating sweeties, sticky food, and food preparation. Avoid serving too hot or too cold type of foods, and never force the child to eat pressurizedly. Do not serve the snacks close to the milk. The next topic is our meal planning for the school child and the adolescent girls or male. Specifically, the RDA, recommended dietary allowance for the school children, meal planning for the school child, and RDA for the adolescent, RDA for the meal planning for the adolescent. School child में कहाँ को कहिबा? मैडम 2 वर्ष ପରେ 2 वर्ष बामरे गला कोथरे भी तो मो पढिली ना सॉरी मैम कौन हाँ करे after 5 years ma'am हां केते वर्ष हम करबे स्कूल गोइंग बोली 5 वर्ष ma'am 5 वर्ष पर केते वर्ष पर्यंत जोटा हम गोटे देखो न्यूट्रिशन रे एटा भी गोटे तो 15 years हां मैम 7 to 15 years 7 to मैम 12 मैम 12 school child refers to the children from the age of 7 years up to the 12 years. 12 years. Okay, at that time, no, the growth continues at a steady pace, and specifically in this period, between the 7 to 12 years of age, right, characterized by an improvement of the functioning of the most tissue and organ system. A period pillar बहुत सारा organ ର proper development हुए, and tissue ର ମଧ୍ୟ बहुत सारा growth हुए एवं regeneration ମଧ୍ୟ हुए. And the sex differentiations in growth and development first makes their appearance at around the age of the 10 only. जदि आम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करबा जदि एई एज रे कहार वेट ज्यादा ज्यादा बढ़ी बढ़ी जाय थाए मते जानि कहि परिबे कि मु कहली एई समय रे हमर बॉडी रो जे डिफरेंट टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स रही छी एंड ऑर्गन्स गुडा को बॉडी रे रही छी जेमति कि हमर विभिन्न सिस्टम रे विभिन्न ऑर्गन जेमति उटरस हो ओवारी हो किबा हमर पाल्पियन ट्यूब हो किबा लिवर हो किडनी हो स्प्लीन हो एई जो मेजर ऑर्गन तार प्रॉपर डेवलपमेंट हुए तो जदि हम कंपेयर करबा मेल और फीमेल छुआ भीतर 7 ରୁ 10 वर्ष फीमेल हां फीमेल मैम फीमेल माने अति स्पीडीली बढ़ी जाए मैडम फीमेल yes very good mainly the girls now start weight more than the boys at the age of the 10 years okay and they continue to heavier than them till the early years of adolescent period about 40 years okay the rate of growth in the case of boy is initially very slower but peaks up later and overtake that of the girls also. And during this period also what happened now in our oral cavity two type of teeth is there. One is the deciduous teeth and another one is the wisdom teeth. Excuse me ma'am. Excuse me ma'am ma'am net kon मझरे मझरे टिके स्लो होछि होछि आपनकर सुभुनी वॉइस ना सुभुनी बीच बीच में वॉइस मन मझरे मझरे टिके वॉइस सुभुनी एबे सुना जाउछि यस मैम एबे सुभुछि ओके जितबे न सुना जीव कहबे हला आगे आगे मैम टीथ स्पेसिफिकली टीथ को हम दुईटा कैटेगराइजेशन करिसंती टीथ केते प्रकार एक्चुअली मैडम परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ जोड़ा हां वेरी गुड वन इज द टेम्पररी टीथ एंड अनदर वन इज द permanent teeth okay
एट दिस पीरियड ना हमर परमानेंट टीथ इरप्ट हुए बुझिला को पीरियड रे Yes, ma'am. 7 to 10 years भीतर हमर परमानेंट टीथ रे डेवलपमेंट हुए and at this period also providing the sufficient nutrient to support the growth and the development and mainly vigorously the physical activity will be increases. The recommended dietary allowance for the school going child mainly now in this period the requirement of the calorie protein and the fat requirement will be increases. Then in this period, first differences in the rate of the growth between the boys and girls and differences in the body composition of both boys and girls, growth and development of the muscles, expansion of the blood volumes and increase in the size of the various body organs. Considerable mineralization of the bones and formation of the permanent teeth takes place in this period only. Differences in the rate of growth would influence both energy and protein needs. That means during these periods now the requirement of the energy and protein will be increased because protein in the diet will be properly utilized only if it is also provided enough energy. In other words, now the protein and the energy needs will be influenced by the rate of the growth. The needs of several other nutrients is also increased during this period. And difference in the body composition will influence the energy needs in the particularly body composition influence the energy needs. That means the boys have more muscle tissue and less adipose tissue. You remember this point, this is a very vital point. Boys have more muscle tissue and very less adipose tissue compared to the girls. Since the muscle tissue is more active metabolically speaking, it requires more energy to sustain its activity. This means the more muscle tissue in the body would mean more energy needs. Okay, and the expansion of the blood volume pushes up iron needs. During this period, the total expansion of the blood volume will takes place and it also pushes up the iron needs. Blood volume increases keeping pace with the growth of the rest of the body. As blood volume increases, the number of the blood cells also goes up and therefore the amount of hemoglobin requirement is also increases during this 7 to 10 years of age. And also you have to recommend some iron rich food. And during this period only the mineralization of the bones and the formation of teeth influences calcium needs. That means during this period the requirement of the calcium, the requirement of the phosphorus and the requirement of the other minerals will be increases because at the skeletal growth more calcium is constantly deposited so as to add strength and rigidity to the bones, and the calcium is also being deposited in the permanent teeth also. This is why a liberal intake of calcium, high amount of calcium, phosphorus and other minerals will be increases. Along with that, the other vitamins like the vitamin B1, B2, that is thiamine, riboflavin, and niacin. The RDF for vitamin C, folic acid, vitamin B12, vitamin A remain unchanged for the age of 7 to 12 years. The influence of the sex becomes evident after the age of 20 also. During this period, the iron requirement of the boy is also very vital because the needs for the replacement of the basal losses, mainly the growth needs during this period, and needs for the improvement of the body stores of iron. And iron requirement for the girls, mainly needs for the improvement of body stores of iron, and also needs for replacement of menstrual losses. And also its needs for the iron is very highly required for the replacement of basal losses. And after the age of 10 years, the boys absorb very less iron, about 3% as compared to the girls, about 5%. This means that they must take in more iron in the diet to meet their needs in order to compensate for the lower absorption. Therefore, the RDA, recommended dietary allowance for the iron, are fixed higher for boys also.
Then meal planning for the school children. Meal planning for the school in the child in between the 7 to 9 years and 10 to 12 years of category. Na, if the child is in between 10 to 12 years of age, first we will focus upon the during this period. Now why the nutrition is very important, because in this period the body needs more calorie, and it also the requirement of the iron and calcium will be increases. And while formulating the menu plan for this age group, first you have to focus upon the energy dense food, that means energy giving nutrient like carbohydrates and fats. And the second one is the proteins, irons, and the calcium. And which food we have to include during this period? Mainly, you have to include item from each of the 3 food groups. That means while formulating the diet plan for the school-going children, you have to focus upon the energy-giving food, protective and regulatory, and body-building food also. And include an animal protein source in each meal if possible, and if income permits, the cereal pulses combination to improve the protein quality. Always while आमे केबे भी कोनोसी पेशेंट को ए एज रे सब बेले नै सेही एज कथा त मु कहिबिनी समस्त पई हमको आमे सब बेले गोटे जिंस को आमे नै कि जदी खाइबा जेंति आमे खाली सीरियल्स नबा पल्सेस न नबा खाली भात नबा आ पनी परिबा सिझार तरकारीटी तास तो गोळे गोळे आमे खाइ देबा ताले सेही कॉम्बिनेशन रे जो आमे नबा सेटा हम बॉडी ठीक से ऑब्जर्व करिवो नै तो सब बेले आमे खाद्य सहित भात सहित डाली नबा निहाती दरकार दैट मींस जेतो बेले आमे एनी सीरियल्स नो देखुथि आपण मन जेतो बेले आमे बिरी डाली देकी चावल देकी त हम पिठा करंती ता साइड रे आमे गोटे चटनी भी रखंती बुट डाली रो चटनी हो बुट डाली चटनी किबा कोन गोटे तो माने पल्सेस जेंति के आपण छोले करंती किबा के आपण मटर तरकारी कर दियंती तो एटा कोन पे करंती कारण जदि सीरियल पल्सेस रो कॉम्बिनेशन हमें करिबा भलो से नबा ताले हम निहाती रूपे प्रोटीन रो क्वालिटी ता जहां पे हम इंटेक करबा से भल से ऑब्जर्व करबो बॉडी ताको भल से असिमिलेट करबो and includes the foods rich in the calcium and iron. And for the meal planning for the school children and the adolescent period, first you have to formulate the breakfast, then pack lunch, and after that in the evening also you have to mid-morning must be there or evening snacks and dinner. After the dinner, post-dinner is also very vital for the adolescent period. Post-dinner means in the post-dinner आपण माने जदि किछि भी न दउछन ताले गोटे ग्लास टी खीर रे 20 ग्राम रो हळदी पाउडर पके की देई परिबे अदरवाइज एनी प्रोटीन शेक देई परिबे किबा मिल्क सहित आपण किछि ऐड करके प्रोटीन पाउडर मते पिला को देई परिबे किंतु आपण निहाती रूपे देबे बट जिते बेले हमें डिनर नै थियो राती 11 रे तापर पोस्ट डिनर नबा की बिल्कुल नै जदि डिनर हमें 9:30 भीतर हमें आफ्टर 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर पर ही हम गोटे पोस्ट डिनर पिला को दबा. What are the other specific considerations for the menu planning of adolescent period? Mainly the breakfast should be substantially and should be planned around the cereal based preparation like the milk, eggs, pulses and fruits should be करते हमें जहाँ हेले भी ब्रेकफास्ट रे खाली गोटे ब्रेड सहित ब्रेड टोस्ट सहित टिके जाम दे दियंती किंतु एटा कंप्लीट ब्रेकफास्ट हैला नाही सब बेले हमर ब्रेकफास्ट टा टिके हेवी होबा दरकार स्पेसिफिकली हम कहूची जो माने कि एडोलेसेंट पीरियड रे बिकॉज़ जेतो बेले पिला माने स्कूल को जाउछंती आमे कोन करछंती एइदर तांकर समय रो अभाव हो किबा आमे जेतु वर्किंग थांती आम पाखरे भी समय रो घोर अभाव थाए तो आमे जोटा इजी आम पई हुई आमे ताको रेडी करिके देदु किंतु आमे आपण माने बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट एतिके मने रखंतो जदि आमे ब्रेकफास्ट पूरा भरपूर पिला को देकी न छाड़ी चंती ताहाले तार ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्रेन रो टिके कमी जीवो दैट मींस आमे जहां भी खाउ चंती अल्टीमेटली से कोथरे कन्वर्ट होची आमे जहां खाउ चंती से कोथरे कन्वर्ट होची मैडम एनर्जी ब्लॉक एनर्जी हमें बॉडी पाउची सहितरो ग्लूकोज पहुंची प्रत्येक टिश्यू पाखरे ग्लूकोज ब्रेन रे पहुंची ना पहुंचुनी देखछन केतला हेडेक जते बेले हुए जते बीपी टिके कमी जाइतिबे नॉर्मली जते बेले हेडेक होची ना जोटा हाइपरटेंसिव केस मु कहूनी जते ब्लड प्रेशर बॉडी के अछि मु कहूनी अदरवाइज एनी नॉर्मल केसेस जते नॉर्मली हेडेक भी हैला आपण
ଚିନି ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ହେଡାକ୍ କମିଯିବ। କଣ ପାଇଁ ଚିନି କଣ ପହଞ୍ଚେଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପହଞ୍ଚେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ କଣ କହିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ हाँ ग्लूकोज पहुंचाऊँ एवं सी ही आपण ब्रेन को एनर्जी दौर जोटा कि आम गोटे जिन कम करने आम शक्ति पाँच जिते बड़े आम अल्प किसी खाद्य आम पिला को देकी छाड़ी दौरान जमती कि ब्रेड हो टोस्ट हो बिस्किट हो केक हो पास्ता हो नूडल्स हो ये कौन अच्छी एथरे कौन अच्छी मते कहतु आर न्यूट्रिटिव वैल्यू कौन अच्छी किसी नहीं जहाँ फल कि आपण ब्रेन को प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन हो पारु नाही ऑक्सीजनेशन हो पारु नाही ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट हो पारु नाही आपण पिला 10 पिला पाखे बसला बेलू तार एक्चुअली जेहेतु ऑक्सीजन गोटे जगह पहुंची पारिबो नाही तार कंसंट्रेशन सेठी जीव नाही पाठ तो पढ़ाऊे टीचर बट आमर माइंड से पर्यंत पहुंची आम देख आप नॉर्मल कथा कहूँ जो ओवर स्ट्रेस था बहुत सारा काम करते हमको इच्छा हुए गोटे चाह कॉफी पियाई देला मुझे एनर्जेटिक फील हुए ना ना आपन क्लास ओवर हो आपन पळेबे गोटे कॉफी किंबा चाह पी अरे मो हेडाक हे गेला मैडम कौन मुंडे पूरा भर्ती करदेली नुआ जिनस पुराना जिनस मो मुंड पूरा ये हेलानी मु जाउछि टिके रिलैक्सेशन हेबे सिमिलरली तो जेते बळे भी हम ब्रेकफास्ट पिला को स्पेसिफिकली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंड पीरियड्स में निहाती रूपे आपन ताको गोटे कंप्लीट ब्रेकफास्ट देबे दैट मींस आपण सीरियल पल्सेस रो किछि कॉम्बिनेशन दियंतु जेमति इडली हो किंबा आपनकर चकुली हो किंबा जदि सेटा भी न दउछन पोहा भी आपण दियंतु विथ वेजिटेबल तक उपमा बने के दियंतु किंबा रुटी सहित बॉइल्ड वेजिटेबल बने के दियंतु किंबा डालमा दियंतु जहां भी दियंतु ता सहित किछि गोटे मिल्क प्रोडक्ट रखंतु दैट मींस एटा जदि आपनकर सीरियल पल्सेस रो कॉम्बिनेशन हला तो सेठी आपण साइड रे कोन करिवे 50 ग्राम्स रो छेना राति रो आपण खीर रे लेंबू चिपुड़ी की छेना छिड़े की रखियो ताको 50 ग्राम्स रो देबे ता सहित गोटे सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स मस्ट बी देयर जो सीजन रे जो रीजन रे आपण बिलोंग्स करूछंती से रीजन रे कोन अवेलेबल अछि से जिंस को आपण निहाती रूपे ताको ऐड करबे जति पिला वेज प्रोटीन न ने कि नॉन वेज प्रोटीन नउची तो स्कूल गला को आपण जहां भी ब्रेकफास्ट दियंतु ता सहित गोटे बॉइल्ड एग मस्ट बी देयर अदरवाइज एग रो पोच बने कि हो एग रो ऑमलेट बने कि हो मन रखंतु सब बेले जितो पिला मानको आपण एग दोचंती होल को आपण सब बेले यूज करबे दैट मींस ओनली एल्बुमिन पार्ट दैट व्हाइट पार्ट हमें कोन करचंती कोलेस्ट्रॉल हे जिवो ये हे जिवो से हे जिवो बोली हम सेटा को डिस्कार्ड कर दियंती बट सेटा नो पिला मानकर ब्रेन रो बूस्ट अप करिया पे मेमोरी पावर को एनहांस करिया पे एवं प्रॉपर ऑक्सीजनेशन करिया पे एवं न्यूरल सीथ रो प्रॉपर डेवलपमेंट करिया पे ब्रेन रो नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करिया पे हमको निहाती रूपे होल एक पिला को दबा स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस वन इट्स वेरी वाइटल बुझिएला ता सहित कोन कोन हम ऐड करबा ए आम भाविबानी जे गोटे जिनस देदेबा सेतरे सब पाई जेबा पण से नु सब जिनस अल्प होना कहीं सब जिनस को कॉम्बिनेशन करके हम निहाती रूपे दबा दरकार एंड डिनर एंड लंच डे जहां भी हम मेनू प्लान रखुचंदी द डाइट must be in the balanced meals based on item rich in protein vitamins and the minerals also and while formulating the menu plan for the school going children and during the adolescent period na add the body building हमको दरकार ना body building energy giving रे तो अपन माने जहां भी इधर राशि माने राइस रो आरंभ कर राइस रो माने चावल रे बना हितो जेंति मो इडली कहले कि चकुली कहले एटे किछि दे परिबे कि रोटी हो पराठा हो इडली हो सांबर हो ए सब कोन माने राइस रे बना वाला किछि गोटे जिंस अपन दे देले ता सहित सबुठ बड़ जिनस होची आपनकर ब्रेकफास्ट जहाँ भी दउचंती सेथरो जो भी इंग्रेडिएंट्स थाउची निहाते भीतर किछि बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स रो किछि जिनस थिबा दरकार जेमति कि आपण यू हैव टू ऐड सम pulses in the suitable form in pulses that may be legumes or pulses and add some cottage cheese like paneer or milk any dairy product okay and add meat in the suitable form if meat is not available you can add the eggs in the suitable form okay don't discard that cholesterol part of the egg
And in the breakfast also you have to add some protective regulatory groups. In the protective and regulatory groups now you have to include some fruits and vegetables, and specifically that different scholars fruits and vegetable you have to emphasize that one also, and add some vegetable preparation also. Okay. And in the evening snacks, you have to select some balanced rather than the just a calorie dish. आमने कौन करचे इवनिंग हे गला माने आमे जाकी होटल रो बाहर किछि फास्ट फूड किछि जंक फूड आने की पिला माने जतल स्कूल जे तो आमे मां माने भी ज्यादा से ज्यादा वर्किंग थांती आमे घर को फेरिला माने किछि गोटे हाथ रे कैरी करी कि नै के आस्तंते मो पिला बारी खुशी हे जिवे आ मु बाहर फास्ट फूड तक कहार कोन फरमाइश थाई घरे मामा मो पे आनिबे पापा मो पे आनिबे तो से सब नै कि पहुंच जाते. मैम But समोसा not only samosa, there are so many pakoda like items is available in the fast food. मु कोई भी पारी बिनी कितने सारा कहार को प्रकार तो आमे being a nutritionist आमे सब बले balanced snacks में prefer करिबा. In that balanced snacks रे calorie rich नथिबो जेमति कि आमे समोसा कोंतो पकोड़ा कोंतो किबा आपनकर मार्केट रे मिलथुवा चिकनसी आपनको फास्ट फूड कथा कोंतो it contains the richest sources of calorie only, and that calorie will be increases your body weight of the baby. And second thing is that is also causes the cardiological problem like CAD and other issue will be created in hormonal imbalance मध्ये होबार संभावना अछि. That's why you have to avoid outside fast food or junk food in your diet plan, and you have to particularly focus on the energy, protein, calcium and iron rich snacks must be there. Okay, जेंते आपण जति केबे इच्छा होछि केबे गोटे मक्कार सिझा हो किबा मक्कार पोड़ा हो किबा आपण माने किछि स्प्राउटेड रे किछि सीजनल रीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल जेंते कुकुम्बर ए सब जिंस टमाटो ओनियन एंड लेमन एंड सब तक ग्रीनी लीफी वेजिटेबल जो जोटा हम ऐड करि पारिबा जेंते पुदीना या धनिया ए सब देखि गोटे हेल्दी स्नैक्स भी हम बनै कि दे परिबा किबा आपण घरे किछि गोटे प्रिपरेशन करके देले पिला पय बहुत बेटर होबो सेटा. एंड पिला सहित तो बोलटू हेबिचुएटेड हेतिबो जोटा कि पिला आगु को जाय कि सब बेले बाहर फूड जंक फूड फास्ट फूड ऊपर डिपेंड करिवो नाही. And while formulating the menu plan for the adolescent periods, you have to focus upon the food preference. That means variety must be included by selecting the different types of foods and introducing the variety color. Because अपन को appealing जदि गेस्ट माने जदि देखिबाटा ही सुंदर नथो पिला खाइबा को भी भल लागिवनी. And flavor, texture and the form and shape is also very vital. For the child, do include foods rich in the energy and the protein also, and include rich sources of vitamins, minerals, particularly iron and the calcium rich food, because at that time decalcification, because due to the बहुत सारा bone रो mineralization हेता है, and at that time also हमारा permanent teeth रो development हेता है. तो सेठ में हमें निहाती रूपे diet रे iron, calcium and phosphorus को हमें माने बढ़े दबता content को. And also in for the adolescent and during the school going children always you administer 2 glasses of milk in a day. Okay, if जदि आपण मन को इनकम परमिट करूची तो निहाती रूपे 2 glasses of milk दियंतो. एंड दैट मिल्क रे आपण धीरे धीरे ट्राई करंतो किछि टर्मरिक पाउडर को ऐड करिया पे. And always you use the cereal and pulses combination as often as possible. मु बार ए जिंसटा कहूची जदि हम pulses cereal को मिसेबा ताले से ओडा को एनर्जी डेंस होबा सहित आपन को प्रोटीन भी रिच मिलिबो एवं बॉडी ताको इजीली एब्जॉर्ब करिवो, असिमिलेट करिवो एंड एक्सक्रीशन रे मध्ये हेल्पफुल करिवो. एंड बैलेंस स्नैक्स मिड मॉर्निंग एंड एट टी टाइम आल्सो यू कैन एडमिनिस्ट्रेट that healthy snacks. Modify popular snacks to make them more nutritious. And also this is all about your diet for the adolescent and the school going children. And specifically you have to focus upon for the children's now our serving too many processed food, जोटा कि processed food हो, junk food हो, fast food हो, then जो हमारा विभिन्न प्रकार जो soft drinks मिलुची, cold drinks मिलुची, इस सब जिंस को नियंत्रित रूप में avoid करिबा. And ensure that the child does not include any junk food in the diet also. And do not let the child miss main meals like the breakfast. बुझियला आपन को बार कहूची पिला जति पाठ मन रखिया पई चाहउछन्ती, पिलार जति हेल्दी चाहउछन्ती ताले
हुए अपन डिनर मिस करंतु चलिबो बट ब्रेकफास्ट इज वेरी वाइटल बहुत इंपोर्टेंट अपन ब्रेकफास्ट न खोई कि केबे भी जदी किछि भी अपन पारु नाहंती देन अपन खीरो देकी खीरो सहित अपन मल्टी ग्रेन्स को मल्टी पल्सेस को नेकी सीरियल्स पल्सेस अदर प्रोटीन को ऐड करके गोटे छतुआ बनेकी सेइथरे अपन राइट बनाना पाचिला कदली को ऐड करंतु एंड यू हैव टू ऐड इंस्टेड ऑफ एडिंग द शुगर यू हैव टू ऐड द गुड़ जोटा जगेरी जोटा ब्लैक कलर जगेरी इज अवेलेबल मार्केट बहुत सारा मिलुची तो एटा को गोटे दे दियंतु तो सेटा आपनकर प्रोटीन पाइबो कार्ब पाइबो फैट पाइबो एंड अदर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट गुडा को रिचेस सोर्स देयर एंड सेइथि रे आपनकर पिलार बहुत समय पर्यंत भोक मद हे परिबो एंड ग्लूकोज प्रॉपर्ली ब्रेन को सप्लाई हे परिबो बुझी होची मु कोन कहूची यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम Okay, and you have to don't allow the child to eat the sweet sticky foods in between the meal. बुझिपाले आमे सब पले मील्स रे ही आमे मिठा दे देथांती आ अठा अठालिया जेंति मैदा रे बनावाला जिंस देथां सेटा को सब आमे अवॉइड करबा एंड स्पेसिफिकली कोनोसी पिला जति कोनोसी मुहूर्त रे खाइबा पई इच्छुक नहो से समय रे मध्ये हम प्रेशराइज करके पिला को बेसी खुआइबा नै जेति कि से खुशी रे नउचे सेति कि ता बॉडी को ताको दरकार सेति कि दवा पई ट्राई करबा ओके आमे बर्तन पढिले स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस मन आरबीएस मन पर कोन जिंस को हमें बहुत फोकस करबा ड्यूरिंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस ओके नाउ आई विल डिस्कस अबाउट the RDA recommended dietary allowance for the adolescent period adolescent में कहा को कहबा केति एज भीतर हम adolescent period बोले कहबा कहंतु अपन माने सब जानि छंती कहंतु मैडम 12 वर्ष पर मैडम 10 12 वर्ष to पर 19 18 years. वर्ष मैम 10 to 19 years. 10 to 19 years. समस्त तो इंटरमिक्स करी कोइ मु कहा कथा को सुनि जानि मैडम 10 to 19 years. मैं पढ़ी स्कूल चिल्ड्रंस में कितने वर्ष पढ़ले मैं ए जो पढौतली कितने वर्ष पर्यंत 12 वर्ष 7 to 2 years भीतर पढ़ले बाद पर कितने वर्ष आछि 13 हमर स्पेसिफिकली जो हमर स्पेसिफिकली जो मेल हो किबा फीमेल हो जो उडा को हमर सबुतक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलपमेंट होउची एंड हमर रिप्रोडक्टिव सिस्टम द प्रॉपर डेवलपमेंट होउची बोथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किबा सेक्सुअली ग्लैंड गुडा को जो एक्टिव होउची तो इस को पीरियड होउची एडोलेसेंट पीरियड है ना एडोलेसेंट पीरियड में सब चेंजेस होउची ना नहीं बॉडी यस यस मैम 13 रो सही समय तो हम 18 आ गोटे वर्ष कोन कोटे कटि जीवो 12 वर्ष पर से वर्ष छाड़ देबो हमें माइनस करिबा सीधा दारू जणा पडुन ना दे देबो 13 रो 18 मैम वेरी गुड 13 टू एज बिटवीन 13 टू 18 को हम एडोलेसेंट पीरियड बोले हम पढिबा एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आवर बॉडी रो जो इंटरनली बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रो प्रॉपर डेवलपमेंट हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रे अपन जो भी सेक्सुअल ग्लैंड्स रही सेक्सुअल ऑर्गन्स गुडा कर रही जेमति फीमेल मानन करो कोन हमरो ओवरीज हो मामारी ग्लैंड्स हो किबा फैलोपियन ट्यूब्स हो किबा हमर यूटेरस हो किबा कोन आ कोन रहला हमर थायराइड ग्लैंड मध्ये प्रॉपर डेवलपमेंट हुए एटा होची फीमेल मानकर मेल मानकर कोन एपिडिडाइमिस हो टेस्टिस हो स्क्रोटम हो स्पर्मेटिक कॉर्ड हो ए सब रो प्रॉपर डेवलपमेंट हुए ए टू ए पीरियड भीतर तो एटा होची नॉट ओनली सेक्सुअली सेकेंडरी ऑर्गन विल बी डेवलप और ग्लैंड विल बी एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंट पीरियड एटा सहित मध्य बॉडी रो बहुत सारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ए समय रे ही डेवलपमेंट हुए एंड आपण माने देखिथिबे स्पेसिफिकली इन दिस पीरियड ना पिला माने बहुत सारा चिड़चिड़ी बहुत सारा माने माने देखिबे आपण तांको गोटे भलो जिंस रे काउंसलिंग करथिबे से आपण उसरे पॉजिटिव वे रे पिला केबे नो नथिबे दैट मींस से समय आपनकर फिजियोलॉजिकल मेंटली पिला पूरा टिके एपट सेपट कारण जो ता इंटरनली जो सेक्सुअली हार्मोन गुडे को जो सिक्रेशन होतबो ना सीटा को भी डिस्टर्ब करि दोथो तो सेही समय रे ना निहाती रूपे वेरी वाइटल न्यूट्रिशन को फोकस करबा एंड न्यूट्रिशन को इंपोर्टेंस दबा वेरी वाइटल आ सेही समय जो न्यूट्रिशन निहाती दरकार हम ताको निहाती रूपे ताको नबा दरकार बिकॉज़
सेई समय रे जदि हमें सेई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन दा जदि डेफिसिट रहइबो सेई ग्लैंड रो जो हार्मोन रिलीज होउची सेई हार्मोन रिलीज हेई परिबो नाही प्रॉपर्ली तो जदि सेई समय रे सेई हार्मोन न रिलीज होबो ताले सेई ग्लैंड ता प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हेई परिबो नाही याके ता परे आपण जेते जहा कहले मतलब जेमति की ड्वार्फिज्म जो आपण देखिथिबे जो माने बापा माँ दुई जन जाक डेंगा थिबे या कम हाइट थिबे तांका पिला जदि वन शॉर्ट हाइट हेई गला जदि 21 वर्ष देई गला तापर आपण जेते इंजेक्शन दियंतु जहा करंतु कोन नो चेंजेस नथिंग विल बी चेंज देखछन ना केबे पेशेंट आसीबे आपण मानको पाखु को आपण देखिबे बुझियला ना माने हां निश्चित आसीबे बहुत सारा पेशेंट आसीबे से भलिया कारण जेते बळे आमे जो सेही समय रे सेही ग्लैंड रो माने कर थायराइड ग्लैंड रो सेही समय रे मते थायराइड ग्लैंड रो तारा थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड इज द मेजर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी and it will secrete the two hormones. One is the T3 hormone and the another one is the T4 hormone. T3 is the thyroxine and T4 is the triiodothyronine. And both these two hormones play a very major role for the management. माने body रो सबु तक body रो metabolism पाई एवं body रो other जो gland जो other hormone release होची ताकू regulate करिया पे these two hormones plays a major role. खाली तो ए दुईटा हार्मोन्स नहीं ता सहित मेल मानकर की हार्मोन रिलीज होची एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होची फीमेल मानकर इस्ट्रोजन रिलीज होची ऑक्सीटोसिन रिलीज होची तो ए सब गुडा कर प्रॉपर्ली रेगुलराइजेशन पाई बोली निहाती रूपे हमर डाइट प्लेस ए मेजर रोल तो आमे ए एडोलेसेंट पीरियड रे को प्रकार मेनू रखिबा को प्रकार डाइट नबा एंड आदि हमर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंट पीरियड कोन हबो कोन से विषय में डिस्कशन करबा बुझी होची समस्त को मुझे कहूची निरुपमा मैम बुझी होची कोन कहूची यस मैम आज्ञा मैम यस मैम प्रज्ञा मैम जानी होची प्रज्ञा आर यू देयर यस मैम बुझी होची किछि हाँ मैम सब बुझियला ओके थैंक यू सर आपण जणे ही अछंती आउ के आउ समस्त जॉइन करू ना हंती की अमित सर आपण कॉलेज में आपण कॉलेज में की जॉइन करू ना ऑफिस रे भेज रही है सब दिन आपण माने बिजी नहंती किए सब बिजी नहंती कहले मते फिर भी करू छु कोन कोन दरकार नहीं जब कोरोना कुछ भूल कुछ समस्त बिजी किए बिजी नहंती समस्त कर किछ ना किछ काम रही सर केही मत इजी नो समस्त ऑनलाइन बिजी कारण एठी आपण तो वंस माने कोर्स रे एडमिशन नै छंती माने हमहु तो जहां लिम तो पास आउट खाली तो असाइनमेंट देखि कर देले माने खाली तो अपन डिग्री एते माने एई पीरियड रे गोटे डिग्री गोटे कागज न पे आपण जॉइन करना हंती एठी कागज तो अपन सर्टिफिकेट तो अपन कोर्ट भी पाइ छिबे बट नॉलेज कोर्ट पाइबे आ मु तो कहिबी माने 100टा बही पढिबा अपेक्षा गोटे क्लास जदी माने मते मिस करले मते बहुत माने मो ये कथा हम कहूची तो निहाती रूपे चेष्टा करंतु हमको जेतकी समय भी क्लासेस दिया होउची ये साइट तो निहाती रूपे ताको हमें ये करबा ओके and the adolescent periods mainly it's in individuals between the 13 to 18 years of age is called as the adolescent period 13 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସକୁ हम adolescent period ବୋଲି କହିବା and these periods now adolescent the major physical mental and emotional changes takes place in this period only and so in adolescence the rate of growth in adolescence is second only to the infancy and this period na the witnesses sharp increases in height and also weight is also very rapidly increases this is the indicator of growth also and the boy weight in this period 32 kg after crossing the age of 10 and weight about 59 kg at the age of 18 you remember this point and during this period also the muscles and the bone increases in size and strength also and also the substantial growth and development of many specific body system starting from the skeletal system and the muscular system also and the muscles and the bones increases in size and strength specifically the heart and all the organs of the body like the lungs
stomach, kidney, attain their final adult size and level of functioning also during the adolescent growth periods. And in this period also the blood volume will be increases, and this is necessary for the improvement in the functional capacity of the respiratory, digestive and the circulatory system. एटी हमर totally हमर ए period को जेतला हम body पहुंच जाय था ना से समय रे totally all the system will be activated properly, and this is necessary for the improvement in the functional capacity. हमर circulatory system तार function properly माने तार capacity मध्ये body जाय, digestive system and respiratory system also. As the period of adolescent draws to close, growth is completed and adult size is reached. And by then all the organs in the body system reaches that maximum possible level of maturity and the development. And in this period, now the appearance of the sex characteristic during the adolescent years is of the great importance, because in this period, now the major observable sex-related changes includes the enlargement of the breast and the enlargement of our other sexual organs, specifically the pubic and the axillary hair, and the menarche in girls between the 12 menarche in between the age of 12 to 14 years of the age. Menarche means the menstruation. That means the first monthly losses of the blood for 3 to 7 days in the girls. This period is called as the menarche period. Menarche period means cycle is called as the menarche period, and it signals the fact that her reproductive system has begins functioning and is approaching maturity also. It is a very vital period to know that the growth and the sprouts precedes menarche. And for the boys na the jemti male female manankara mu कहली menarche start habo, and from that say somewhere to he each month re amaro menstrual cycle भी start habo, and body is fully able to for the maturation. And सेठी amaro male manankara madhya बहुत सारा changes देखा जाए, जेमति कि in case of boys na the hair appears in the pubic area and the axillary area also, and other body regions such as the cheeks, chins and upper lips, and there is also change in the voice. देखिथिबे जेतो adolescent period आसे से समय रे कोन में हमर thyroid gland रो thyroxine hormone properly release हुए, and at that time also हमर voice ओडा को पूरा deep हे जाए. deep हे जाए माने कोन बुझिले कहले? हाँ मैम, मो पूरा एज हो 17, डीप हे जाय माने मते लागे से जहा कथा कहे बहुत बड़ पार्टी लागुची. एग्जैक्टली माने से जो टोन ता जो पतला थिबो ना से टोन ता माने कंठटा पूरा मोटा हबा आरंभ होई जाय. हां ता सहित देखि मैम गोटे क्वेश्चन अछि जे एई समय रे झियो पुंकर पाखा पाखी धर मो पुओ को 17 वर्ष, मोर सेठी गोटे भौणी रो झियो ताकू हेछि 14, किंतु 14 मो पुओ बहुत जोर हाइट बढ़ी गला, किंतु से किछि माने देखा जाय छि जे गोटे झियोटा पाखरे ता हाइट ता जत्ते बढ़ुची आ तार आगो को बढ़ुनी, ता पछरे किछि माने रीजन रहउची झियोटा हाइट बढ़ुनी से पुओटा किंतु हाइट बढ़ी चलुची. निहाती रूपे हां सेटा पे कोन पे हुए मैम एटा? अरे हाँ मेनली तार मते लागुची एंकर जहार प्रॉपर्ली ग्रोथ होची तार जो बॉडी रो जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो हाँ ग्रोथ पे जो हार्मोन रो रिलीज होबा कथा बॉडी रो तार सफिशिएंट रिलीज होची, ता सहित तार डाइटरी पैटर्न एंड तार फिजिकल एक्टिविटी एंड सी स्ट्रेचिंग किछि करूतबो या योगा करूतबो किबा रनिंग करूतबो किबा साइक्लिंग करूतबो किबा बहुत सारा ताइक्वांडो हां योगा ताइक्वांडो दीटा जगह करूचे. गुड इवनिंग. हां तो तार भी सेतिकी थायरॉक्सिन हार्मोन मते लागुची माने सिक्रेशन हो नतबो, तो सेति पय जदि आपण चाहू भी चंती तार डेवलपमेंट होबा पई तो आपण ताको किछि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योगा रो किछि कहंतु ताको रेकमेंड करंतु, एलोंग विथ दैट आपण प्रोटीन एंड डाइट रे मते ताको टिके गाइड करंतु हैला. आ फिजिकल किछि एक्सरसाइज करबा रनिंग हो साइक्लिंग हो पुची खेलिबा मते
गोटे गोटे जिनस मन रखु फीमेल मानक आम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रही द लोअर पेल्विक एरिया तले जो रही गोटे रही एब्डोमिनल पार्ट एंड द बिलो द एब्डोमिनल पार्ट ना पेल्विक एरिया इज देयर इन द पेल्विक एरिया आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिचुएटेड तो सेही रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे हमर मझिरे रही जाउची यूटेरस एंड बिसाइड्स द यूटेरस two fallopian tubes is there and in that two fallopian tubes are connected with the hanging by the help of the round ligament amaro then amaro this side to dita ovary rohichi ovary ro सब बेले ओवुलेशन हे कि ओवमोडा को रिलीज होची तो सेही जितबे हम पुची खेलिबा माने हमर पुची खेलिबा पळे हम टोटल लोअर पेल्विक एरिया रो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अछि ताको से स्टिमुलेट करबो एक्सरसाइज करबो स्ट्रेंथनिंग करबो याकि हमर ओवरी रो जो इस्ट्रोजेन जो रिलीज होची हला इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हो से सब हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज होबो याकि आपनकर एनी काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्पेसिफिकली जो मानकर मेंस्ट्रुअल साइकिल रो एतर डिस्मेनोरिया हला ओलिगोमेनोरिया हला मेनोरेजिया हला मेट्रोरेजिया हला या ल्यूकोरिया हला किंबा कोनसी टाइप रो पीसीओडी हला पीसीओएस हला ए सब तक डिसऑर्डर पाइले वेरी गुड यू हैव टू एडवाइस देम to regular basis they have to practice that what puchi khel jia manak na eta mode se tanko बहुत आंसर रे हेल्पफुल करियो मैडम टिके अब अधंटा टिके पार्टी चाहते हो एक्सक्यूज मी मैम एनी डाउट आपण चारटा टर्मिनोलॉजी नेले तार मीनिंग टिके बुझेबे कोटा कहले मैम ये जो एडोलेसेंस गर्ल पे की जो पुची पे की कहले चारटा टर्मिनोलॉजी कहले कि ए जो माने टर्मिनोलॉजी मींस हमर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कोथरे तयारी हे छै सेटा ना कोन पचत ना रोग जो कहले ए रोग पई दरकार बोली तासे तो मेनोरिया डिस्मेनोरिया मीन्स हमर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडोलेसेंट पीरियड्स ना ड्यूरिंग दिस पीरियड्स द फीमेल आर वेरी प्रोन टुवर्ड्स द फीमेल माने जो माने गर्ल्स चाइल्ड थांते दैट वेरी प्रोन टुवर्ड्स द कोन एनी काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक dysmenorrhea is the menstrual difficulty menstruation painful menstrual cycle is called as the dysmenorrhea you write down that point पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपण मन देखिथिबे बहुत जन मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पूरा नॉर्मली हे छै से किछि जानंती नहीं नॉर्मली पीरियड्स हे छै 3 डेज या 4 डेज जहां भी ब्लीडिंग पूरा नॉर्मल थाए किंतु आउ के जन कर देखिबे पूरा वेरी पेनफुल तांकर थाई पेन हबो तांकर लोअर पेल्विक एरिया पेन हबो टोटल एब्डोमिनल एरिया मसल्स भी पेन हबो एंड बैक पेन मध्ये हबो इवन सेवन को फीवर भी आसी जाय इतने जोरे पेन intolerable pain that disorder is called as the dysmenorrhea okay leukorrhea the next term is your leukorrhea 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 means excess white discharge from the vaginal wall is called as the leukorrhea okay amaro normally menstrual cycle जो 28 days रे रही आफ्टर ओवुलेशन पीरियड रे मध्य माने पीरियड स्टार्ट 12 रो अप टू 18 डेज हो या 20 डेज या आ के जन को ता परे मध्य व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वाजिना टिके होता है तो दैट्स द नॉर्मल इट्स नॉट द एबनॉर्मल जति हमरो जति सेतिकी व्हाइट डिस्चार्ज टिके भी न होबो ताले कोन हो वाजिना वॉल ता पूरा ड्राई हे जिवो then if the vaginal wall will be dry na it will very prone towards the infection सेटा infection आडो को गति करिवो तो सेटा नॉर्मल किंतु जतबेले जेतिकी सिक्रेशन होबा कथा ताटो जति ज्यादा सिक्रेशन होता है बहुत जनकर बहुत सारा व्हाइट डिस्चार्ज हुए तारा मेडिकल टर्म होची लिकोरिया LEUCORRHOEA हैला सेटली PCOD होची पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर and PCOS होची polycystic ovarian syndrome ओके ए दीटा को केस रे कोन हबो से फीमेल मानकर से एडोलेसेंट गर्ल्स मानकर स्पेसिफिकल से वेट बहुत बॉडी जीवो एवं से माने बिल्कुल पीरियड्स ठीक रे हबनी जियो माने हे कि मते तांका देह रे बहुत सारा माने एक्सेस हेयर ग्रोथ हबो दैट मे बी फेस रे ही पारे अपर लिप्स रे मते होई पारे देन पिंपल्स बहुत सारा मुहरे पिंपल्स मते हबो एवं सेमानकर आ के जन पूरा वेट लॉस हबो एंड पिंपल्स ज्यादा हबो वॉइस टा पूरा जियो हेले मते पो बलिया वॉइस ओडा को बाहरिबो से ओडा होची पीसीओएस रो सिंड्रोम
पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम एवं से आगू जाके डायबिटीज हबार संभावना अच्छी। तो यही सब केस को आम जो ये करने एडोलेसेंट पीरियड इज वेरी वाइटल पीरियड। तो आमको हार्मोन को रेगुलेट करने आम बॉडी रो अदर्स कहली ना इन दिस पीरियड आम टोटल सब प्रकार डेवलपमेंट हो स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेवल मेंटल लेवल एंड आमर सब लेवल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने निहाती रूपे डाइट प्लेस ए वेरी मेजर रोल। बुझीगला जहाँ पचारे से बुझीपारे मो कथा क्वेश्चन पचारि मैम ए जो आपण कहले डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रॉब्लम टा मैम को कारण रो या कौन ता पे रिमेडी यही शुणु आम तो पाठ डेविएट करदेवी ये कहीदे बट आम चेष्टा करवा कहीदे मुझे ना आम आम टपिक मुझे आपंकर गोटे पेपर अच्छी थेरापेटिक न्यूट्रिशन बोधे ये मुझे देखनी सिलेबस नेक्स्ट ईयर थी मैंने नेक्स्ट पेपर थी कौन थेरापेटिक न्यूट्रिशन में पूरा आपको डिजीज स्पेसिफिक दैट मीन सिस्टम आपन जो 12टा सिस्टम रही starting from the digestive system up to the nervous system and in between that reproductive system is also there. In the reproductive system I will discuss about the every disorder but अपन जे पचारछन कहूची कोन सेटा माने पीरियड्स समय जो डिस्मेनोरिया होची काहे की होची सो मेनी कॉजेस हां सो बहुत सारा कारण हेता पारे बट प्रथम होची देखन तो आमे से जो हमरो सर्विक्स रहिची बुझिए ना हमरो यूटेरस सहित वाजिनल वॉल रो कनेक्शन गोटे सर्विस गोटे माने गोटे पार्ट अछि जोटा कि हमर लिप्स जेमती बुझिला सेठी हमर दीट हमर जेंति अपर लिप्स लोअर लिप्स ओठरे जेमती अछि तो आम ओठटा को हमर बंद करके रखला पर हम किछि कथा कहबेन तो लिप्स हमर कोन ओपन होछि खोला होछि तो अपर लिप्स अपर आडू को जाउछि एंड लोअर लिप्स तो जस्ट लाइक दैट ओनली हम वाजिना भीतर मध्य हम सर्विस पेपर रे गोटे दी प्रकार गोटे अछि इंटरनल ऑस गोटे एक्सटर्नल ऑस गोटे अछि बुझिया एक्सटर्नल ऑस सिचुएटेड बाहर अछि इंटरनल ऑस ता भीतर अछि तो सेटा मध्य से कोन गोटे ओपनिंग टाइप रो गोटे ओपन गोटे से ओपनिंग टा के जनकर कोन हेते बहुत छोटो साइज थाए तो छोट वालटा से भीतर से जो रास्ताटा जो द्वारटा जो मार्गटा बहुत छोट थाए वेरी वेरी स्मॉल माने ओपनिंग बहुत वाइड न थाए जहाँ जो फल हम जो इच मेंस्ट्रुअल साइकिल रे जो पीरियड स्टार्ट हुए तो एक्स्ट्रा जो हमरो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑइल कोन तो बाहर आसिया पय नितो से ब्लड टा गोटे फ्लो रे बाहर के आसिया पय चेष्टा करते ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट हार्मोन तार प्रभाव रे तार मंथली हैला माने से तार चेष्टा करू जति की गंधिया ब्लड अछि ताको हमरो बाहर करो सेपटे गोटे फ्लो रे ब्लड टा आसुताय बट ए जो रास्ताटा तार कोन वाइड न थाए बहुत नेरो थाए तो ए जो ब्लड जो फ्लो रे आसला ताको से बॉम्बार्डमेंट करे माने ताको से जो यूटेराइन केविटी यूटेराइन वॉल और से जो ऑस पाखरे एक्सटर्नल ऑस इंटरनल ओएस ऑस जो रही ताको से कोन एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड करे सी ट्राई करे जे ब्लड टा इजीली बाहर को बाहर जीवा पाई बट से को जेहेतु रास्ता ओपनिंग खोली न थाए तो सी खाली ताको कोन करे प्रेशराइज करे इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर अपन दैट वॉल रे ही ताको बाडे हुए जोति पे देखिथिबे जो माने कर से बड़ा पेन होय ताकर स्पाज्मोटिक पेन पूरा एमटी माने क्रैम्पिंग पेन पूरा देखिथिबे से माने कह मैडम पूरा माने आसे कंप्लेंट करंती मैम पूरा क्रैम्पिंग पेन होची एंड स्पाज्मोटिक पेन पूरा एमटी धरिथिबो किछि समय पिला देखिथिबे एमिति पेशेंट आसंती हम पाख को सीधा छिड़ा भी हे पारंती पूरा एमती तळी पेट को धरिकी एमती पूरा बेंड हे जाते एंड मसल्स पूरा तंकर एमती टाणी हे जाय एते जोरे बॉम्बार्डमेंट होता है तापर कोन हो जते बोले सेटा धीरे धीरे से रास्ताटा माने केते समय हार्मोन रो तो इफेक्ट रहिबो से जते हेले जा ले मुदे चाहिबो से जिंसटा को बाहर को फोपाडीबा पई आपण देखिबे जेतोले बन्या आसुची आमे जते चाहा बंध बांधिले जहा कले भी त आमे अफेक्टेड होउचंती ना नहीं तो सी जिते जहाँ कले मधे सी एनी हाउ धीरे धीरे सी बाहर को बाहर तो जो चाहूथिबो ब्लड टा बाहर बट रास्ता नथिबो आ सेही प्रेशर टा आसी तापर बॉम्बार्डमेंट होतबो सेही कारण ही सेटा प्रथम गोटे कारण आउ केते जनकर किछि एब्नॉर्मलिटी थाई मींस जन्म रो ही किछि एब्नॉर्मलिटी जेमती यूटेरस रो साइज जेतिके हपा कथा सेतिके साइज नथिबो ता साइज टू कम थिबो आ किछि को रेट्रोवर्टेड यूटेरस मींस जो यूटेरस जेमती एंटीरियर पोस्टीरियर जेमती रहबा कथा सेमती न है कि पछुआ आगुआ है कि जदी किछि रहि जाईछि किबा अदर किछि माने जन्मगत जदी किछि विकार भी थाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे
सी भी आपनकर एटा गोटे कारण करि थाए बुझिए ना तो सेत पे देखिबे ए सब जक जिंस मैक्सिमम भलो होई जाय जते बेले हमें मैरिज परे से रास्ता ऑटोमेटिकली खोलिबो एंड धीरे धीरे स्पाज्मेटिक पेन विल बी रिड्यूसेस सेति पई बोली मुझे अपन मन को जो कथा कहूची पुची खेलिबा पड़े कोन हबो से तार फ्रिक्शन हे कि से जो ओपनिंग टा तार खोली जीवो पुची खेलिबा तो फीमेल मानक पई बेस्ट एक्सरसाइज आ कोटा मध्य नाही बुझियले मैम आ गोटे काइंडली माने बल्की यूट्रस माने कोन बल्की यूटेरस मीन्स मैडम आपन जो यूटेराइन केविटी अछि हला यूटेरस भितरे हमर तीनटा मसल्स रहिछि हमें डिबेट करूछथि पाठर मते टॉपिक सारी बार अछि तो ऊपर लेयर होछि एंडोमेट्रियम नेक्स्ट लेयर होछि आवर यूटेरस इज मेड अप ऑफ मेनली थ्री टाइप्स ऑफ लेयर इज दे फर्स्ट वन इज द एंडोमेट्रियम एंड सेकंड वन इज द मायोमेट्रियम एंड द लास्ट वन इज द endometrium perimetrium myometrium is the last means innermost layer of the uterine cavity innermost layer is the myo means very means muscular highly muscular and vascular area is the myometrium but हमें जितेबले ड्यू टू द हमर लाइफ सारा माने हमें एडोलेसेंट पीरियड परे हमर कोन से कारण वसत हमें जति हमें सेडेंटरी लाइफ मेंटेन करछे बॉडी रो कोन से प्रकार फिजिकल एक्टिविटी नहीं हमर तो सेटा कोन हुए धीरे धीरे एंड हमर इंटेक सब वाले ज्यादा थाए एंड हमर जो प्रोटीन रो डेफिसिट थाए खाद्य फैट रो डेफिसिट थाए बट कार्ब रो कंसंट्रेशन सब वाले अधिका कार्बोहाइड्रेट जनरली हम समस्त का मेनू प्लान रे हम कार्ब रो ही ज्यादा थाए आउ सब जिंस हम कम नेतंती तो जदि हम सेई भलिया किछि नहीं चले तो सेटा कोन करे बल्की हे जाए बल्की माने मोटा हे जाए ठीक हे जाए बुझ पाले आमे देखो आमे मैक्सिमम काम आमे बसिकी ही करते एठी किछि हमर लोअर पेल्विक एरिया रे किछि प्रेशर पड़े कि हमर बिल्कुल नाही तो सेति पई सेटा भी गोटे कारण अदर कारण भी अछि सेही कारण लेके सेटा ठीक है तो आमे प्रथम रु ही किछि पेल्विक मसल्स को एंड एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेचिंग करला बढ़िया किछि योगासन किछि चालीबा किछि स्विमिंग करबा किछि साइक्लिंग करबा किबा पुची खेलबा किबा दौड़ी डिया खेलबा किछि इन्वर्टेड पोस्चर रे किछि योगा को प्रैक्टिस करबा ताल तो सित मसल्स गुडा को पूरा एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होबो एंड पर्टिकुलर से एरिया को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचबो से काहे कि ठीक होबो गोटे जिंस मोटा काहे कि होबो बल्कि काहे कि होबो आपन पर ए सब दिन करे केबे गोटे जिंस होइनी आपन को से डिसऑर्डर होबा पई बहुत समय लागि थाए हला थैंक यू मैम थैंक यू सेक्स एंड हमर जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक रही छी ना दिस सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स वन इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक गोटे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक गोटे and types of mainly primary sex characteristic कौन है and secondary sex characteristic कौन है এটা adolescent period generally develop करता है and the primary sex characteristic is mainly the body changes directly associated with the sexual reproduction primary sex characteristic रे हमारे body changes directly associated with the sexual reproduction but in the secondary sex characteristic the physical changes that distinguish males from the female but are not associated with the sexual reproduction. This is the major difference between the primary sex characteristic and the secondary sex characteristic. In the primary sex characteristic, the body changes directly associated with the sexual reproduction. But in the secondary sex characteristic, the physical changes that distinguish males from the female but are not associated with the sexual reproduction. And specifically in the primary sex characteristic means the girls menarche development of the ovary menarche period रे जब फर्स्ट menstrual period start हुए से समय कौन हुए ना हमर ओवरी रे प्रॉपर डेवलपमेंट हुए एवं फीमेल सेक्स जो ग्लैंड गुडा कथा से मतलब एक्टिव हो जाय थाए एंड सेकंड जो हम फर्स्ट प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक रे कोन हो ना menarche हला माने पीरियड स्टार्ट हो पीरियड स्टार्ट होला को अपन को ओवरी रो सब गुडा को चेंजेस डेवलपमेंट करबो इनसाइड बॉडी रो एंड फीमेल सेक्स ग्लैंड गुडा को मते डेवलप करबो एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कोन हबो ब्रेस्ट रो एनलार्जमेंट हबो बॉडी हेयर रो चारियाडे अपन देखिबे गुडो हाथ इवन अपन को छाती बॉयज मन को छाती रे हो कि एक्सिलरी हेयर हो कि अपन को पो मानकर निश हो कि झील मान बेले लोअर लिप्स से चुटी बाहर हो कि बहुत सारा एक्सेस हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होगा ये सब हूँ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हम एंड बॉडी हेयर चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द हिप्स आल्सो
आपण मैंने देखिबे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जेतल डेवलप करबो हमर हिप रीजन रे प्रॉपर्ली देखिला माने जणा पड़ी जिवो पूरा एंड बॉयज मानकर जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होची मेल सेक्स ग्लैंड्स ओडा एक्टिव होबो एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस सेतल पर्यंत टेस्टिस रो डेवलपमेंट हेई नथिबो जिते बळे आपनकर एडोलसेंट पीरियड्स रे ही प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक रो डेवलपमेंट हबा फल रे ही टेस्टिस बिकम्स टेस्टिस रो डेवलपमेंट स्टार्ट हेजबो एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉय होची ता बॉडी सारा देखिबे पूरा डीप हेयर स्टार्ट हबो एंड तांग वॉइस उडा कबारे डीप हिजिबो and widening of the shoulder blade muscles sort of widening about start about this is all about the characteristic of the primary and secondary sex characteristic of both male and female and specifically in the girls the fat deposit are laid down in the abdominal region and the breadth of the hip increases हमरो से समय आडिपोज टिश्यू तो जा फैट थिबो थिबो ता सहित ड्यूरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स जेतल ऑर्गन का डेवलपमेंट होची से समय ही हमरो एब्डोमिनल रीजन रे कोन हबो ज्यादा से ज्यादा फैट डिपोजिट हबा आरंभ करिवो एंड हिप साइज आल्सो इंक्रीजेस इन द बॉयज आल्सो in the boys there is an increase in the muscles mass also increase muscles mass and particularly in the shoulder upper arm region such difference in body composition in the abdominal region and the breadth of the hip is also increases. In the boys case, there is the increase in the muscles mass is also increases, and there is the shoulder and the upper region the muscles is also increases. And during this puberty period, the physiological changes is also takes place. And during the sexual development, the mainly in the male hormone, in the case of the male, the androgen secretion will be increases, and for the female, the level of the estrogen is increased. I already discussed about this. This androgen and the estrogen are also called as the sex hormone. And the sex hormone, due to the secretion of these sex hormones, mainly changes the body structure, body composition, and the rate of growth, and the sex organ also properly developed. बुझिएला हम कौन कहूची yes ma'am yes yes ma'am बुझी परचंती ना yes ma'am केमिति yes ma'am हां मेल मानकर कोन हार्मोन रिलीज होची सेठी पाई बोली कोन सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कोन चेंजेस होची फीमेल मानकर कोन होची ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड ओके then what is the RDA for the adolescent period? Then recommended dietary allowance for the adolescent. Mainly during the adolescent period, the requirement of the protein, iron, and calcium is very highly. It is required. It is necessary to support the rapid growth of all the body tissue. And then during the adolescent, like the school children are very active, and this pushes of energy needs also. That's when the increase the blood volume and the growing the skeletal accounts for the increase in the iron and calcium needs also. In the case of the girls, the loss of iron through the monthly blood losses is also considered when the working out the iron needs. Okay,
and the thiamine, riboflavin, and the niacin requirement is also very highly needs during this period. The more the energy needs, the more would be the need for the B complex vitamins also. It's very important for the adolescent to be provided with a sufficient iodine also, because in this period, if the deficit of iodine, it causes the so many complications. Iodine is a part of hormone thyroxine produced by the thyroid gland. Thyroxine regulates the rate of metabolism, and it's also very crucial for the proper physical and the mental growth of the body. Iron is high, sorry, iodine is highly required. This makes it important, particularly in high growth phases such as the infancy and the adolescent period. And according to the ICMR expert groups, the committee in 2022, the intake of iodine per day for the adolescent period 140 milligram per day. है ना? ICMR हमर जो रही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो बोर्ड रही से रेकमेंड करिछि जे हमको गोटे ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड रे 150 मिलीग्राम रो हमको दरकार आयोडीन. जदि जेते हमें जहा खाउतबा ताले जदि आयोडीन रो डेफिसिट थिबो ताले तो प्रथम कथला थायरोक्सिन प्रॉपर्ली सिक्रेशन होबनी. थायरोक्सिन जदि न भी हार्मोन प्रॉपर्ली सिक्रेशन हेले ताले सबुतक बॉडी रो एब्नॉर्मलिटी देखा जिवो. तो सेहिति पे हमको निहाती रूपे पर डे रे एतिकी आयोडीन नबा निहाती दरकार. ता सहित मध्य हमें माने सब बेले adult sedentary women हुंतु even exceed them in the case of the several many protein, calcium, iron, vitamin B12 and vitamin B complex is also highly required during this period. Now the recommended dietary allowance during the adolescent period. Adolescent period रे हमें स्पेसिफिकली जो एनर्जी केते नबा. एनर्जी हमको दरकार 2500 किलो कैलोरी. एटा उते मनी रखो, समस्त मनी रखंतो. एडोलेसेंट पीरियड रे हमको 2500 किलो कैलोरी पर डे रे हम रिक्वायरमेंट रहउची. एंड ता सहित जदि हमें सही समय रे तापर जदि प्रेगनेंसी जदि रहउची ताले सेमानक पई हमें सहीथरे ही ऐड करिबा 350 किलो कैलोरी माने 250 किलो कैलोरी होची नॉर्मल एडोलेसेंट पीरियड रे. बट जदि हमें से समय रे प्रेगनेंसी लेडी के अछंती तो सेमानक पई एक्स्ट्रा 350 किलो कैलोरी रो हमर दरकार totally calorie requirement. And the protein requirement during the adolescent period per day na 55 gram per day 55 gram. आउ जदि प्रेगनेंसी अछंती ता से तो हमें आउ सेत्रे 10 ऐड करबा. हमर फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे 10 extra gram protein is required. And during the second trimester रे हमर कोन हुए ना extra 22 gram. That means 52 gram तो नॉर्मली हम एडल्ट फाइन दरकार. किंतु सेकंड ट्राइमेस्टर माने प्रेगनेंसी रो 3 मास रो 6 मास भितरे 55 ग्राम्स होची नॉर्मल कोन प्रोटीन रिक्वायरमेंट. सेथरे हम 22 ऐड करबे तो 77 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. एंड जेतेबेले हमर आयरन रिक्वायरमेंट होची ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड 32 ग्राम. एंड हम जदि से समय जदि प्रेगनेंसी किबा लैक्टेशनल पीरियड रे अछंती ताले 40 ग्राम्स पर डे इज रिक्वायर्ड. एक्स्ट्रा आयरन इज रिक्वायर्ड. And calcium requirement during this adolescent period, calcium highly required because that at that time na proper अपन माने जे जेंत पछाउतले से समय ही हमर जति कि जहां बोन रो ओसिफिकेशन ही कि बोन रो डेवलपमेंट हबो एंड बॉडी रो इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हबो. सब सिस्टम को स्टिमुलेट करिवो, सब हार्मोन को प्रॉपर्ली रिलीज करिवो. सेट पय होली हम ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड 1050 grams of milligram of कोन calcium is required. Iron 32 milligram and calcium होची 1050 milligram रो calcium during the adolescent period. But जेते बळे हमर adolescent period जो प्रेगनेंसी हम जाउछंती तो प्रेगनेंसी पीरियड रे पर डे द calcium requirement is 1200 milligram. बुझियला? बुझी पादिले ना नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then during the adolescent period specifically we have to focus upon the energy keeping nutrient, and specifically we will focus on the very good sources of carbohydrate we must add in the diet, like the not
simple carbs. Complex carb you have to add in your diet, and fat. Fat should be in the very healthy fats, not the saturated fat or the trans fat in your diet. And include some proteins, iron and calcium in your diet. That protein should be in the very first class protein or good biological value of protein. Which foods to be selected? Selection of foods for the adolescent diet, mainly na items from the each food group in each meal. এটা মনে ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ମେନସନ କରୁଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ବି ମେନୁ ପ୍ଲାନ ବନଉଛନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମେନୁ ପ୍ଲାନ ରେ ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଫୁଡ୍ସ ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ର ଫୁଡ୍ସ କୁ ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ ଡାଏଟ ରେ ରଖିବା and good energy and protein sources को हमें खाद्य रे निहाती रूपे इंक्लूड करिबा cereal pulses combination to improve the protein quality मो आपण खाली cereals माने खाली cereals खाइबानी खाली protein माने खाली protein नबने हमें we have to include both cereal combination animal protein सब बडे हमें लोक माने को एडवाइस करिबा good sources of protein को नपा पाई and high biological value of protein first class protein patient हो कि normally healthy person हो जी जेकी होना कहेंगे animal sources of protein is very good for our body and good calcium and iron sources मते निहाती रूपे रखबा को sources को calcium पाउछन के iron पाउछन ऑलरेडी डिस्कस करछि सेउडा को हमें निहाती रूपे खाद्य रे इंक्लूड करबा एक्सक्यूज मी मैम तो केते ग्राम दरकार प्रेगनेंसी टाइम रे कोनटा आयरन क्वांटिटी आयरन रो क्वांटिटी टा प्रेगनेंसी टाइम रे केते एडोलेंस पीरियड रो कहले 32 ग्राम रो 32 milligram and during the pregnancy and adolescent 18 वर्ष रो उठ होई गला हमको 40 milligram रो दरकार आयरन हला ओके थैंक यू मैम कैल्शियम होचे adolescent period 1050 milligram and during the pregnancy and माने 18 years above जति होची 1200 milligram ठीक while formulating the menu plan for the adolescent na hame kichita specific considerations should be we kept in our mind like the reducing or increasing the total amount of food consumed must be done with a because of its impact on the health. Like now, while we are formulating the menu plan, first we have to focus on the food such as the very milk and greeny leafy vegetable or deep yellow color vegetables and fruits and whole cereals should be emphasized. आमाने केबे मध्य रिफाइंड cereals को केबे मध्य adult period हो कि any period रे मध्य we have to avoid the refined cereals because if we will include the refined cereals in our diet na it will increase our glycemic index in future माने हमको बहुत सारा like obesity हो कि cancer हो कि weight put up भी कि बहुत सारा lifestyle disorder हबार संभावना अछि सेति हम सब बेले पेशेंट को अन्य साधारण लोक मान को मते हम सब बेले तांको माने एडवाइस करिबा नपा पाई कोन माने ब्रांड सहित कार्बटा नबा पई हमें कहबा चोपा सहित कार्बोहाइड्रेट नबा चोकोड सहित अटार रुटी नबा चोपा सहित भात नबा दैट मींस अकांडिया उष्ण चावल भात हो पार्बोइल्ड राइस हो मोटा चावल हो नाली चावल हो ए भले तो सेटा हम बॉडी पे बहुत फायदा हबो and eating such foods helps to add the valuable minerals and vitamins to the diet and specifically during the preparation of the adolescent menu plan we have to include some vitamin A and vitamin C rich foods are frequently amane kom karanti e samay vitamin C और vitamin A kotha bhuli hi jaanti neglect karanti but don't do like that because आमे जे विटामिन ए और विटामिन ए जति अधिकार नउछन ताले हमर विटामिन सी भी जति अधिकार नबा ताले से आपन को आयरन कंसंट्रेशन को बढ़ेबा सहित कैल्शियम रिच को मध्य गल से एब्जॉर्ब करबो कैल्शियम रो ये मध्य बढ़े परिबो आमे सब बळे ना जति बळे आमे एडोलेसेंट पीरियड रे मेनू प्लान बनाउचंती मेनली आमे ग्रुप एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एडोलेसेंट पीरियड तो सेतिर हमें कोन करिया सब बळे लोक मानकर पिला मानकर से वेरी प्रोन माने इच्छा करथि जे किछि माने जंक फूड खाइबे किबा नूडल्स खाइबे किबा फिश खाइबे किंतु फ्राइड फॉर्म रे फिश खाइबे या कि तरकारी किबा जो तावा भजा फॉर्म रे नेबिनी सिझा फॉर्म रे नेबिनी जंक फूड नेबे फास्ट फूड नेबे बाहर जो विभिन्न प्रकार
soft drinks so cold drinks so taku daily basis diet re include karibu to you have to refuse them to include all these types of means unhygienic food in our diet plan. सेगुड़ा को हमें चेंज करके टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट हमें निहाती रूपे हेल्दी फूड्स को निहाती रूपे डाइट रखा दरकार. During the adolescent period, the include very rich sources of energy, protein, iron, and calcium, and give the whole cereals instead of you are giving the refined cereals. Always you have to recommend them to take the whole cereals rather than that of the refined cereals, and include the foods like all the dairy product, dark greeny, leafy, and yellow, orange color vegetables and fruits. Increase the meal frequency to 5 to 6 meals if possible. Also includes the substantial snacks providing the 1/4 to 1/5 of the diet for the energy, protein, calcium, and iron rich food also. And specifically during the adolescent period, you have to avoid them from the fast food, junk food, and processed food. And mainly do not let them adopt extreme diets, means to reduce the weight or build muscles. Such diets are usually unless and sometimes very dangerous for them. About mainly I mean too much fat rich sources, the sugar rich foods, and strictly avoid them for the use of the alcohol or any kind of drugs, particularly if the adolescent girls is in pregnancy. At that time you don't give any kind of medication or any kind of drugs to them. This is all about your adolescent diet, and the next one is your एंड जितेबाला आम एडोलेसेंट पीरियड रे बेसी फोकस करवा से आयरन रो वॉल्यूम भी से समय बढ़ी थाए माने बढ़ी जाए थाए तो माने बेसी एडवाइस करवा जेमती फ्रेश फूड्स गुड़ाक मटन तो नुह आम चिकेन हो फिश हो छोट फिश हो ये सब को नापे ये करवा एंड पल्सेस रे बेसी भल हो समस्त प्रकार बीन्स मार्केट रे मिलुची नाली झुडंग मंजी कला झुडंग मंजी किबा बीन्स रो मंजी किबा सिंबर मंजी ये सब को निहाती रूपे खाद्य रे नेबे. एंड सोयाबीन्स हो काउ बीन्स हो लेंटिल हो पीस हो किबा बेंगल ग्राम दाल हो हर्स ग्राम दाल ये सब निहाती रूपे नेबे. एंड खाद्य रे निहाती रूपे टिके टिके जगेरी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सुगर ना ताको हम जगेरी किछि किछि मात्रा रे में निहाती नबा. एंड प्रत्येक मेनू प्लान रे एटलीस्ट पर डे गोटे थरा हम एनी लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है दैट मे बी अमरनाथ लीव्स हो किबा ड्रमस्टिक लीफ हो किबा मिंट लीव्स हो मस्टर्ड लीव्स हो बथुआ हो एमती किछि कैटेगरी रो इंक्लूड करबा. एंड फ्रूट्स रे हमें स्पेसिफिकली वाटरमेलन हो रेजिन हो डेट्स हो किबा एप्रिकॉट्स हो इस टाइप रो किछि भी रखि परिबा. सीरियल्स रे अपन माने राइस फ्लेक्स हो बाजरा हो जेंति होल व्हीट किबा होल व्हीट फ्लोर रागी रागी रे मते कोन रागी रे तमे चोपा बाहर करंती ना तो होल नियंती दैट इज आल्सो वेरी गुड. एंड विटामिन सी रिच रे अपन माने ऑरेंज हो पाइनएप्पल हो मौसमी हो किबा पपैया ऑरेंज हो गुआवा हो आमला ए टाइप रो किछि हमें रखि परिबा. एंड मिल्क प्रोडक्ट रे अपन जहां भी अपन ए तर अपन खीर दही छेना पनीर या खोआ ये सब किछि रखि पारे. फैट्स एंड ऑयल्स बटर घी हाइड्रोजनेटेड ऑयल इज आल्सो देयर. फ्रेश fruits egg liver is also very good for them. This is all about your adolescent diet. मैम गोटे क्वेश्चन थिला मैम ए जो झियो मानकर आयरन और कैल्शियम ए जो एडोलेसेंस पीरियड रे बहुत दरकार पुओ मानकर दरकार की समय आयरन एंड कैल्शियम कौन कहले मु बुझी पारली ना ओते पछेलंतु मैडम ए जो एज टा 13 टू 18 एज रे जो पुओ माने अछंती कैटेगरी पुओ मानकर ताकर ए समय रे आयरन एंड कैल्शियम रिक्वायर होई थाए की. हाँ निहाती रूपे कारण से समय सबुतक आयरन कैल्शियम रो तो निहाती कारण आपण से समय तो फीमेल मानकर आयरन बहुत सारा मंथली लॉस हो बुझियला. एंड ब्लड रे बॉडी रे मध्य ब्लड वॉल्यूम बढ़िबो बुझियला. सबुतक ऑर्गन रा प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हबो सबुतक जेति की जगह हमर ग्लैंड उडा करो सेडा एक्टिवेशन हबा मीन सी तरह हार्मोन रिलीज करबो तो निहाती रूपे ए समय अधिक ही सबुतक जिंस दरकार. ओके
ପୁଅଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦରକାର, ଝିଅଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ପୁଅଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଦରକାର ମ୍ୟାମ୍। ନାଇଁ ନେଚୁରାଲି ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିକଜ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥଲି ଆମର 45 ml ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ହଉଛି ଇଚ୍ menstrual cycle ରେ, ବୁଝିହେଲା? ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାସକୁ ମନ୍ଥଲି ପିରିୟଡ୍ସ ହଉଛି ନା, ଇଚ୍ 28 ଡେଜ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଯୋଉ ଆମର ପିରିୟଡ୍ସ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ଇଚ୍ menstrual cycle ରେ ଆମର 45 ml ର ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ହଉଛି। ତ ସେଇ ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ଟା କୋଉଠୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ ହବ? ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଲେସ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦେନ୍ ଦାଟ୍ ଅଫ ଦ ମେଲ୍ ନା, ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ମ୍ୟାମ୍। ନାଇଁ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଯଦି ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ କୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମ ମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନିହାତି ରୂପେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍, ବିକଜ ଆମର ଯେତିକି ଲସେସ୍ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ତ ସେମିତି ଲସ୍ ହୁଏନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଅଧିକା ରହିବ। ଅଧିକା ଆମେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ ସାଇକେଲ ରେ ଆମର ବଡିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆମକୁ ଲସ୍ ହିଁ ଲସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦେନ୍ ଦାଟ୍ ମାନେ ମେଲ୍ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍, 2 ରୁ 3% କମ୍ ଥାଏ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଆମର 12 ରୁ 16 ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ବଡ କଥା, ନର୍ମାଲି କଥା ମୁଁ 14 ରୁ 16 କହୁଛି, 14 ରୁ 16, ବଟ୍ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ 16 ରୁ 18 19 ଏଇ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଥାଏ, ଅନଲେସ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ତାଙ୍କର ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ନିହାତି ରୂପେ ଆଇରନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଟା ଦେବେ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଟା ପଠେଇବେ ଏଜ୍ ମୋ ୱାଇଜ ଫୋନ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ହଁ ସାର୍ ପେନ୍ ଧରି ପକେଇଲେଣି? अच्छा अच्छा ओके 7080 21048 ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଥରେ 700 7080 80 21048। 48। थैंक यू मैम। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମତେ ତାହେଲେ କହିବେ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କ୍ଲାसेସ୍ ରୁ ବୋଲି କହିଦେବେ ହେଲା। ओके এইটা मैम। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নো ওনলি কলিং নম্বর বুঝিপারলে আপন যে চার্টটা পঠেবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর অলগা 94 94 9 94 3932 32 7753 7753। এইটা थैंक यू হোয়াটসঅ্যাপ मैम। হচ্ছে एगेन मैम मैम आउ थरे कुहतु 943932 7753। थैंक यू मैम। ओके next topic is our effective utilization of food resources. Effective utilization of food resources, food budgeting, food selection, and food storage, food preservation, and maximization of the nutrition benefits, food safety. Okay. आज तो बोधे टाइम हो गला आमे हाँ 6टा बाजिगला हमको ये करने पड़ो तो नेक्स्ट क्लास रे मु सब गुड़ाक आउ जहाँ जहाँ रहा मु डिस्कसन करी जार भी किसी भी जदि कौन डाउट रही मत आप पचारिकी बुझीपारे किसी असुविधा नहीं एनी न्यूट्रिशन रिलेटेड कौन भी किसी आप सब्जेक्ट रिलेटेड हो कि किसी भी डिसऑर्डर रिलेटेड हो किसी भी जानापी चाहूँगी मत आपण मैंने पचारि पारे किसी असुविधा नहीं है एथर ओके थैंक सारिबा यू मैम। हाँ थैंक यू मैम मैम। मैम संडे क्लास ऑफ रोची कहतु कहतु मैम माने क्लास टा केते दिन रोची मैम क्लास टा केदिन आपनको मिलिथिबो ना शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे। नाइन मंडे टू फ्राइडे अच्छा मोर तो बोधे ଆଜ୍ଞା आउ माने मोर ए देखिबे मु काली कहि देबे हैला शेड्यूल टा मु प्रॉपर्ली मोर मन ले बोधे एई वीक टा तो मोर ही अछि तापरे एई ता पर मेल रे आसी मैम मेल रे ओ आसी ठीक जी अछि मु शेड्यूल। आपन से भी अछि किछि असुविधा नै मो पर अन्य मैडम माने अछथि समस्त आज्ञा आपन हेल्प करि आज्ञा आज्ञा ओके आज्ञा आज्ञा थैंक यू सो थैंक यू मच मैम थैंक थैंक यू यू मैम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम।